हेलो 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 इट इज डे 3 ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट 2023। मैं हूं दर्पण, आई एम द फाउंडर ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट और आप देख रहे हैं इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स इवेंट एंड प्लेटफॉर्म फॉर द वॉइस ओवर एंड डबिंग इंडस्ट्री। दिस इज इंडिया वॉइस फेस्ट। पिछले 6 सालों से आपने वॉइस ओवर एंड डबिंग इंडस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार दिया, इतना सराहा, इतना साथ दिया कि देखिए, एक दिन से हमने शुरुआत की थी 2018 में। 2020 में जब पूरी दुनिया थम गई कोविड की वजह से, तब हम ना सिर्फ थमे नहीं, बल्कि हमने उस एक दिन के इवेंट को 7 दिनों के इवेंट में तब्दील कर दिया। और आज 2023 इंडिया वॉइस फेस्ट दिस ईयर is not a 1 or 2 day event. It is not even a week-long event. India Voice Fest 2023 is a 10-day मेगा महोत्सव जो डबिंग और वॉइस ओवर की इंडस्ट्री की प्रतिभा को दर्शाता है, प्रतिभा का जश्न मनाता है और वॉइस ओवर और डबिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को सेलिब्रेट करता है, उन्हें शोकेस करता है। बल्कि इंडिया वॉइस फेस्ट 2023 के 10 दिनों में से 2 दिन ऑलरेडी गुजर गए हैं और आज तीसरा दिन है। पहले 9 दिन ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन पैनल डिस्कशंस, मास्टर क्लासेस, वर्कशॉप हो रही हैं इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों के साथ। और 17 दिसंबर यानी कि संडे द 17th ऑफ दिसंबर इज द मेगा ग्रैंड फिनाले एंड अवार्ड सेरेमनी, जिसके लिए अगर आपने अभी तक डेलीगेट पास नहीं लिया है तो कोशिश करते हैं कि हम आपको स्कैन कोड अभी दिखा दें। लेट्स सी इफ माय कॉलीग आनंद कैन ओके he's shown us the scan code. This is the code. You can scan this code and get your delegate pass for the grand finale and award ceremony. You can also join us for the social networking party and dinner. So ये तो रही इंडिया वॉइस फेस्ट को अटेंड करने की बात। वैसे पहले जो 9 दिन है, इन 9 दिनों के सारे इवेंट्स, सारे सेशंस, सारी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है फॉर एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, because we are streaming live on YouTube and Facebook of India Voice Fest. तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि what lies ahead this evening at India Voice Fest 2023. India Voice Fest 2023, conceived and curated by yours truly, Darrpan Mehta, produced and organized by Sugar Mediaz. Our main sponsors are Sound and Vision Studios, associate sponsor Audio Magic, industry partners MnM Talkies, Gulmohar Media, G-Corp Media, and Aural Arts. Proud supporters are Neshma Academy of Acting and Voice Acting, Surabhi, Javeri, Vyas, KRG Kreative Studio, and Skylink Freight Forwarders. So, ladies and gentlemen, boys and girls, it is time for our first session of the evening, which is the Acting and Voice Acting Masterclass. और इस कमाल के सेशन के लिए हमारे साथ हैं इंडस्ट्री के 2 दिग्गज जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और they are absolute stalwarts and veterans of the industry, and it is extremely generous of them to do this for us because they love India Voice Fest. They have a passion not just for their craft, they have a passion to even share their craft with everyone. We have with us, let me get on the screen, sabse pehle Shumanto Ray. Can we have Shumanto on the screen, please? Hi, Darpan. Shumanto, hi, good evening and welcome to India Voice Fest 2023. Good evening, and good evening to everyone who all are watching us right now. Welcome to Thank you, Voice Fest Shumanto. 2023. And let me give a very, very brief introduction of Shumanto Ray, a man of many talents. He was the National Creative and Content Head
for three of India's top radio brands, Fever FM, Radio Nasha, and Radio 1. He is a classically trained dancer, singer, and composer. He's composed ad film jingles, corporate anthems, radio jingles, and also scored music for award-winning short films. He's been an 8-time nominee and 6-time winner at the New York Festival. He's the creator and director of mega audio dramas like Ramayan, Gandhi, Friends in a Metro, Kya Wo Sach Tha, Sainath, Jai Bajrangi, Mahabharat, Shanaya, I Hear You, Bhaskar Bose, Azad Hind, Beyond Boundaries, and has been the creative director for Commander Karan Saxena. The list is absolutely endless. This is one man who wears many hats, figuratively and metaphorically. While he has directed the stalwarts and the who's who of the film and television industry, he's discovered plenty of new talent in the field of voice acting. He's also a successful dubbing director. Among his recent projects are Lust Stories 2 and Chor Nikal Ke Bhaga. By the way, Shumanto Ray is also a very prolific voice acting talent who's been a part of audio productions like Hawkeye, Ravan Rising, Batman, Shania, and many more. Many, many more. Why are we not talking about the many more, Shumanto? Because I think the list is incomplete. Let's not forget the most amazing dub that you did for Lust Stories 2 for the character Suraj Bhanuman. Yeah. So I think the name of the character in English, which was played by Kumud Mishra. Fantastic. So that's the multifaceted Shumanto Ray. And now I'm going to get on screen Swarupa Ghosh. Can we have Swarupa, please? Okay, there we have Swarupa Ghosh. Hi, Darpan. Can you hear me, Darpan? We can hear you loud. Can you hear me? Okay, glad. Because Absolutely. there's been a venue change, and wherever I am sitting, I'm trying to get the network. I've been sort of really petrified of that I will not be able to connect. But unfortunately, I've been able to the connect. network is good right now. जहाँ है वहीं रहिए क्योंकि network बहुत अच्छा है. बहुत बढ़िया है. Thank you. Swarupa, Okay, great. everyone is a celebrated actor, and not many people know that she's a fantastic voice artist herself. She won the India Voice Fest award last year for her for her voice acting for an audio drama, and she's also a prolific acting trainer. In fact, Shumanto and Swarupa both also run this beautiful masterclass on voice acting, this workshop on acting and voice acting, and I'm so grateful to the both of you for doing this. Although this is going to be like a 1 hour or so kind of a masterclass, but I'm sure this is going to be a trailer to the real big workshop that both of you do. Both Shumanto and Swarupa also mentor a lot of young talent for acting and voice acting, and I think at India Voice Fest, I am very fortunate because it is my good fortune that I have such great relations with the both of you that especially Shumanto, over the last few years, there has never been one time, whether he was with radio or whether he moved out of radio and branched into full-time into acting and voice acting and direction, there has never been one time when Shumanto has not been a part of India Voice Fest. He's a very generous guy, and I'm really looking forward to the both of you imparting a lot of precious wisdom to aspiring voice artists and actors about bringing characters to life through the power of acting and voice acting. So, you know what? I am right now literally the kebab mein haddi mein beech mein hu aap logon ke. So I'm going to move out and I'm going to hand over this masterclass to the both of you while I enjoy watching it from the confines, from the comfort of my studio. So over to Shumanto and Swarupa. I'll probably come in later towards the end if there are any questions. If you can see the questions, fine. Otherwise, I'll be there to get them. Okay. So, over to the both of you. Thank you, and I'll see you on the other side. Bye-bye. Thank you, Thank you, Darpan. Darpan. So, Swarupa, why don't you start? You start, Shumanto, because you were the one who actually brought me into it. And I have to say that to the audience, like, if I've learned anything about the voice when it comes to audio drama, this is the man. And I am as much as here to listen to you and learn from you as much as to sort of share my own experience. Thank you. मैं इतने सम्मान से फूल के कुप्पा हो जाऊंगा. Anyways, let's start. So today,
व्हाई वी आर हियर, सी वॉइस के लिए ट्रेनिंग बहुत अलग अलग किस्म से होती है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। लेकिन पहले तो मैं एक चीज थोड़ा सा, जो एकदम नए हैं इस इंडस्ट्री में या कुछ एकदम ही शुरुआती स्टेज पे है, तो मैं उनको एक छोटा सा डिफरेंस समझा दूं कि वॉइस ओवर अलग चीज होती है, डबिंग अलग चीज होती है, वॉइस एक्टिंग अलग चीज होती है। ये सब अलग अलग किस्म की विधाएं हैं, ये अलग अलग किस्म के आर्ट फॉर्म्स हैं। हालांकि सब आवाज से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये इनका जो पूरा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो एक अच्छा वॉइस एक्टर भी हो या एक बहुत अच्छा डबिंग आर्टिस्ट भी हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि एनी काइंड ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे हमको ऐसे माहिर कलाकार मिलते हैं जो कि सारी विधाओं में पारंगत होते हैं, सारी विधाएं उनको बहुत अच्छे से आती है। सो बेसिक्स तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता है, अबाउट एक्सरसाइजेस ऑफ ब्रीदिंग, अबाउट किस तरह से आप अपने आवाज का ख्याल रख सकते हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये सब, ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मैं अपनी बात कहूं तो मुझे डबिंग से पहले या He रिकॉर्डिंग loves से पहले food. एक ग्लास ठंडा पानी चाहिए मुझे। मुझे एकदम चिल्ड वाटर चाहिए होता है। मैं उसके बिना, मेरे से डबिंग नहीं होती है। और हाँ, ऑफ कोर्स खाना, दैट इज माय लव। सो तो ये चीज जो है ये बहुत इंडिविजुअल है। तो ऐसा कुछ है, मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आपको सूट करता है तो आप अपने हिसाब से कीजिए। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अबाउट वॉइस एक्टिंग, द यूज ऑफ वॉइस इन एक्टिंग, ये थोड़ा सा और डिटेल्ड में जाता है कि और उसमें जो है कि हम एक्टिंग जब करते हैं तो हम क्या करते हैं। हम एक किरदार प्ले करते हैं, हम एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, राइट। सो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मान लीजिए आप स्क्रीन पे कर रहे हैं कैरेक्टर प्ले, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आपको कॉस्ट्यूम्स चाहिए होंगे, आपको मेकअप चाहिए होगा उस कैरेक्टर जैसा दिखने के लिए। कभी कभी प्रोस्थेटिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है आप लोगों को उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए। लेकिन हम एक चीज पे बहुत कम ख्याल करते हैं एज एन एक्टर, एज एक्टर्स और अदरवाइज ऑल्सो, वो है कि आप एक कैरेक्टर में बहुत जान डाल देते हैं अपनी आवाज से। आप किस तरह की आवाज उस कैरेक्टर को देना चाहते हैं, और उस आवाज से मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। बच्चन साहब ने अग्निपथ की थी, उन्होंने वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक नई आवाज लेके आए थे, एक नया, लेकिन उस आवाज ने एकदम ही अलग कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, एक अलग किस्म का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था। तो दैट इज लाइक वन एग्जाम्पल। देयर आर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल। गॉडफादर, आप सबने अगर गॉडफादर मूवी देखी हो तो उसमें भी आप देखिए, द वॉइस प्लेड अ वेरी बिग रोल। वो जो आवाज पहली चीज थी, द फर्स्ट थिंग वाज दैट वॉइस व्हिच ब्रिंग्स आउट अ डिफरेंट कैरेक्टर, a character who smokes cigar and all these things. So that's the importance of voice. और वही क्या मैं जो एक चीज चीज है, बिल्कुल वही चीज है जो हम, मैं और स्वरूपा आज उसी बारे में आप लोगों से बात करेंगे। हम 1 घंटे में कुछ सिखा नहीं सकते, लेकिन हम जो जानते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें। स्वरूपा। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ सुमंता, आपने जो बोला है वो बहुत जरूरी है और वो है भी। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आजकल लोग जब फिल्मों में जाते हैं ना, तो वो एक किस्म की वॉइस पकड़ लेते हैं एंड इन द प्रोसेस उस कैरेक्टर की जो वॉइस की क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। ये कई बार हमने थिएटर में भी देखा है कि क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि लास्ट तक पहुंचना चाहिए, आवाज जोर से आना चाहिए,
they don't work on the particular कैरेक्टर की जो वॉइस की क्वालिटी है, यू नो। और फिर भी थिएटर में ओनली टाइम यू सी इट जबकि आप मान लीजिए आपकी उम्र 25 है और आप जो किरदार निभा रहे हैं उस वो 45 साल के हैं। वहां पे मैंने देखा है कई बार एक्टर्स को उस चीज को ट्राई करने के लिए। बट जो मैं कहना चाहती हूँ कि आम जिंदगी में भी जो किरदार आप निभा रहे हैं वो भले आपकी एज की हो, जरूरी नहीं है कि उसकी वॉइस क्वालिटी आपकी तरह हो। तो इसीलिए कैरेक्टर को समझना। दूसरी बात, हम आम जिंदगी में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वॉइस की लेवल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज है ना, इस पर काम करने के लिए वॉइस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक संपूर्णता लाते हैं एक चरित्र। एज एन एक्टर, whether you are on stage, whether you are in front of camera, ये चीज जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वॉइस एक्टिंग जब आप कर रहे हैं, ये चीज के बारे में आपको अलग से एक अवेयरनेस तैयार हो जाते हैं। I mean, I'll be very honest, that is what has happened to me. Earlier, whatever I used to do, once I got into this voice acting thing, I have become doubly conscious about it. कि अच्छा ये तो होना चाहिए, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं, हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, उस इंसान को हम सुन भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट साइड है इसकी। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला सुमन सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही चीज हम इसी चीज के बारे में आज हम खुल के डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा ज्यादा वक्त दें सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ। तो जितना हम अपनी बातें शेयर कर पाएंगे करेंगे। उसके बाद विल टेक अप एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्मल वॉइस ट्रेनिंग से हटके है। तो इसलिए थोड़ा कहीं अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो उस पर हम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो हो सकता है कि मैं थोड़ी पहले निकल जाऊं। आप प्लीज कैरी ऑन कीजिएगा। श्योर क्योंकि वाकई में बाहर हूँ मैं। ओके, थैंक यू। तो एक समय था कि एक एक्टर अगर किसी दूसरे शहर से बम्बई आया है या बॉम्बे में ही है, कोई काम कर रहा है, तो मैं ऐसे बहुत से वॉइस आर्टिस्ट से मिला हूँ जिनका जो यंग है, दे वांट टू डू वॉइसिंग, बट उनका एक सपना है कि बड़े होकर एक्टर बनना। कोई बुराई नहीं उसमें, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं। अब बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे वॉइस एक्टर्स जो हैं वो थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूँ। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं अब वो डब कर रहे हैं, वो वॉइसिंग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली काफी प्रोजेक्ट्स में देखा गया है जहां पे डबिंग के लिए, एक एक्टर की डबिंग के लिए किसी और एक्टर को बुलाया गया है, क्योंकि वो आवाज मैच हो रही है या कैरेक्टर मैच हो रहा है उसमें। सो लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं। तो इसलिए जब वो लाइंस इतनी ब्लर हो गई हैं, तो हमने अपने सिखाने में भी या अपनी बातें शेयर करने में भी वो लाइंस को थोड़ा सा करीब लेके आए। जो पैरेलल चल रही थी उनको अब हम एक तरीके में, एक लाइन में लेके आए। हम अब हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन की। हम बात करते हैं, जब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं कि आवाज से कैरेक्टराइजेशन कैसे होगा, तो तब हम बात करते हैं वेरिएशंस की। हम वेरिएशन लाएंगे तो कैरेक्टर में एक नयापन आएगा, निखार आएगा। एनिमेशंस में हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। जो भी लोग पुराने एनिमेशन करते आए हैं, जो अब भी एनिमेशंस करते हैं, उनमें होता है कभी कभी आप मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और आप एक कैरेक्टर करते हैं एक आवाज में, दूसरा कैरेक्टर करते हैं दूसरी आवाज में, तीसरा कैरेक्टर तीसरी आवाज में। लेकिन क्या वो कैरेक्टराइजेशन है?
तो मेरा कहना है कि नहीं, वो कंप्लीटली कैरेक्टराइजेशन नहीं है, वो आप एक डिफरेंट वॉइस दे रहे हैं। ऑफ कोर्स उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए ही दे रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, उस आपको लग रहा है कि ये आवाज जाएगी, या जो ओरिजिनल वॉइस है आप उसके करीब करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसको मिमिक करके उसकी तरह अपनी लैंग्वेज में उस चीज को डिलीवर करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, have you understood what the character is before you start dubbing for it, or before you start recording for it, or even shooting? प्रोसेस सब में सेम है, लेकिन क्या हम उसको उतना तवज्जो देते हैं? वो सवाल जो है वो आज हम उसका जवाब देते हैं कि एज ए डबिंग डायरेक्टर मैं आपको बता रहा हूं कि कई दफा ऐसा होता है कि एक बहुत सारे बहुत काबिल डबिंग एक्टर्स, डबिंग वॉइस आर्टिस्ट आते हैं, डबिंग आर्टिस्ट आते हैं, कैरेक्टर देखते हैं स्क्रीन पे, एक या दो डायलॉग सुनते हैं और बोलते हैं लेट्स डू इट, और बहुत अच्छा डिलीवर करके जाते हैं। लेकिन उनको ये करते करते ना कई साल हो गए, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट काइंड ऑफ, एक सीन देख के, एक 2-3 मिनट का 4 मिनट का सीन देख के दे कैन गेज व्हाट द कैरेक्टर इज। बट फॉर people who have just entered the industry, who have just started working, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये समझ लेना, ये प्रोसेस समझ लेना कि हम एक कैरेक्टर को कैसे डिराइव करते हैं, एक कैरेक्टर को कैसे समझते हैं, चाहे हम स्क्रीन पे देख रहे हो, चाहे हम खुद स्क्रीन पे हो, या हम कोई ऑडियो ड्रामा में कोई पार्ट प्ले करें। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, आज हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे। स्वरूपा, आर यू देयर? Yes, I'm very much there. So can you start with the Yes, this thing, yeah. and then I'll. The thing is that कैरेक्टर समझने के लिए जो चीज सबसे पहले समझना होगा कि ये कोई किताब में लिखी हुई चीज नहीं है, ये एक इंसान है। ये कैरेक्टर जो है, हम भले ही उसे कैरेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि हम उसमें उस किरदार को निभा रहे हैं, पर वो एक इंसान है। और एक इंसान को पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात होता है कि उसकी फिजिकल रियलिटी क्या है। ठीक है, फिजिकल रियलिटी होती है, एक उसकी सोशल रियलिटी होती है, एक उसकी इमोशनल रियलिटी होती है, एक उसकी साइकोलॉजिकल रियलिटी होती है। कोई भी इंसान को जब आप डिस्क्राइब करेंगे, आप पूरी चीज शायद नहीं देखेंगे, आप देखेंगे अच्छा ये यहाँ काम करते हैं, फिर धीरे धीरे आपके पास वो चीज खुलता जाता है, इधर क्या बोल रहे हैं, उधर क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं फिजिकल रियलिटी पर इसलिए जोर देती हूँ क्योंकि हर फिजिकल रियलिटी इज ऑल्सो कनेक्टेड विद योर वॉइस। एक इंसान का कद क्या है, उसके अंदर मसल्स कैसे काम कर रहा है, उस पे कहीं ना कहीं आवाज में एक अलग चीज आती है। उसके बाद आता है सोशल रियलिटी, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है, उसकी सामाजिक तबका क्या है, स्टेटस क्या है, वो पढ़े लिखे हैं नहीं है। सो मुझे लगता है, देखिए आप जब डबिंग करने जाएंगे आपको पूरी फिल्म तो कोई नहीं दिखाएगा, आपको वही सीन्स दिखाए जाएंगे कि जो सीन्स पे आपको काम करना है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वो सारे सीन्स को देख कि 5 सीन है, तो 5 सीन में ये कहानी के किस जगह पर आ रहा है, कहानी पे ये किरदार क्या व्हाट शुड आई से, क्या ऑब्जेक्टिव निभा रहा है, और फिर उसका तबका क्या है। और फिल्में एक चीज दिख बीच में, जाती है क्योंकि एक उसके चीज बीच कपड़े। में मैं हाँ, बोलूंगा कि ये जो चीजें आपको बताई जा रही, जो स्वरूपा बोल रही है, और स्वरूपा ने बहुत अच्छे से बताया कि हाँ, आपको उतना वक्त नहीं मिलेगा एज एन आर्टिस्ट कि आप उस, एक आदत डाली एज ए वॉइस आर्टिस्ट, एक आदत डाली कि जब आप जाते हैं, आप डबिंग रूम में बैठते हैं और आप माइक के सामने होते हैं, तो
before even you do a sound check, ask your director about the character. वहां पे बैठा हुआ एक डबिंग डायरेक्टर, उसको पता है सब कुछ, उसने देखी है वो फिल्म या वो वेब सीरीज या जिसके लिए भी आप डब कर, उसको ये कैरेक्टर मालूम है क्या है, तो आप अंदाजा मत लगाइए। मैं आज भी जब कभी डबिंग के लिए जाता हूं, मैं डायरेक्टर से पूछता हूं क्या कैरेक्टर, मैं भी यही करती हूँ। इसका Same इसका हाँ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप मुझे बता दीजिए, तो मुझे एक अंदाजा लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। उसके बाद तो आप हैं मुझे गाइड करने के लिए, तो आस्क योर डायरेक्टर कि ये क्या कैरेक्टर है, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे उन्होंने बोला कि सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है उसका, कितना पढ़ा लिखा है भी या नहीं है, वो जो ये दिख रहा है वो रियलिटी है या इस चीज को फेक करके दिखा रहा है। देयर कैन बी सिचुएशंस, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैरेक्टर क्या है, वो डॉक्टर है, असिस्टेंट डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो गुंडा है, वो स्मगलर है, वो किलर है, कौन है वो, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। और आप ये करके देखिए, आपकी परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। और तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो आपकी आवाज है उसकी पावर कितनी है। डबिंग में, स्पेसिफिकली डबिंग की बात करता हूं, तो डबिंग में सिर्फ ये नहीं देखा जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये देखता है कि इसकी आवाज इस एक्टर से मैच होती है कि नहीं। वो हमेशा देखते हैं इसकी आवाज इस कैरेक्टर से मैच होती है। Absolutely. सो ये देखा जाता है कि आवाज कैरेक्टर से मैच हो रही है कि नहीं, एक्टर से मैच, मिमिक्री नहीं करवा रहा है कोई वहां पे आपसे। सुमन, तो ये बात एक्टिंग के हिसाब से हर जगह चालू है, जरूरी नहीं है ये कैरेक्टर के साथ, क्योंकि कई सारे रोल्स के बारे में मैं बोलूं कि बिकॉज मेरा माय वॉइस इज सो डेफिनेटली, यू नो व्हाट शुड आई से, इट्स नॉट कन्वेंशनल वॉइस। आपको भी पता है कि हर चरित्र के लिए ये वॉइस नहीं चल सकती। कई बार जब ये लोग डबिंग के लिए बुलाते हैं, I don't get that much of work because my voice has a different quality. और वो क्वालिटी हर चरित्र के साथ सूट नहीं करता है, तो ये समझना जरूरी है। और कुछ कैरेक्टर के क्षेत्र में आप अगर फॉल्स वॉइस निकाल भी रहे हो, आप अगर अच्छे भी हो उसमें, वो वर्क नहीं करता, क्योंकि उसकी शक्ल सूरत जो है उसके साथ मैच नहीं करता। एम आई सेइंग एनीथिंग रॉन्ग सुमन, तो इस मामले में? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इन अच्छा, डबिंग स्पेशली ये तो बिल्कुल होता है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कई लोग हम हैं जो जो जिसके बारे में सुमंत ने पहली बात की है शुरुआत में, कि जो हम बाहर से आते हैं, जो हमारे लिए मतलब हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, ओके, उसके बावजूद जब आप कर रहे हैं, आप अच्छे बोल लेते हैं, आप मेरे से काफी बेहतर बोलते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने मातृभाषा में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लोग कहाँ पर स्ट्रेस देते हैं। जब लैंग्वेज बदल जाता है वो स्ट्रेसेस अलग हो जाते हैं, उसकी इंटोनेशन अलग हो जाते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फिर जिस लैंग्वेज में आप बोल रहे हो उसकी भी तबके के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, किस किस्म का इंसान है, उसकी सोच कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वो डायलॉग को डिलीवर करेंगे। और क्योंकि आप एक दूसरे एक्टर की आवाज बन के निकल रहे हैं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना होता है, एक आदत डालनी होती है। एक आदत बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने श्रीमंत से सीखा है, कि सुनना। रास्ते में आप जब ट्रैवल कर रहे हो, आवाजें सुनो, लोगों की आवाजें। जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों की आवाजें। मॉल में भी जाते हैं, लोगों की आवाजें। दुकान में जहाँ भीड़ है, हम भीड़ से अलग रहते थे ना ज्यादातर, वो भीड़ में आपको आवाजों की जो हारमोनी है बहुत खूबसूरत से सुनाई देता है। वो अगर आप समझ सकते हैं, हर आपको अंदर ही अंदर एक समझ आ जाएगी कि शायद
ये टोन होना चाहिए। एम आई रॉन्ग सुमंतो? नो, मैं ये एब्सोल्युटली बोलती नॉट। रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है। हाँ, तो मैं मैं तो ये अब इसी ऑनर है कि पॉइंट से, तुम्हारे साथ बैठी हूँ। माय प्लेजर, इसी इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भाई ये जो अभी स्वरूपा ने बोला कि आवाजें सुनना, ये एक वॉइस एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो आसपास अपने लोगों को देखे, कहीं पे भी जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द की। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए कि आपके आसपास में कुछ कैरेक्टर्स हैं, बड़े सारे चरित्र मिलेंगे आपके आसपास, बड़े सारे, जिनका या तो बात करने का तरीका अलग है, या उनका बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा है जो आप ग्रैब कर सकते हैं, जो आप अपने मेमोरी में कहीं सेव कर सकते हैं। यही चीजें आगे काम आती हैं, बहुत काम आती हैं ये चीजें। जब आप कोई ऑडिशन कर रहे होते हैं, तो जब आप किसी कैरेक्टर को देखते हैं ऑडिशन में, आपको कभी कभी बहुत होता है कि बहुत सारे बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, जब एक एक्टर को ऑडिशन के लिए भेजा जाता है तो कैरेक्टर के साथ साथ वो कैरेक्टर का पूरा ब्रीफ भेजा जाता है कि वो कैरेक्टर क्या है। फ्रॉम वन पैराग्राफ टू वन पेज, 1.5 पेज ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है उस कैरेक्टर का, कि ये कैरेक्टर है, उसका बोलने का तरीका ये है, उसका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, उसका एजुकेशन क्या है, वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसका रिलेशनशिप क्या है, अगर एक सीन है जहाँ एक कैरेक्टर का किसी एक कैरेक्टर के साथ एक कॉन्वर्सेशन है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये सब आपको डिटेल्स आती हैं when it comes from a very good production house. But sometimes they are missing. So if you can ask uh, the person who is connected with you for the audition and ask them कि इसका कोई brief है कि नहीं है, अगर मिल जाता है well and good, या जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके बाद आप क्या अप्लाई करते हैं? आप अप्लाई करते हैं वही ऑब्जर्वेशन। आप ढूंढते हैं कि ये कैरेक्टर ब्रीफ में मैंने कभी कुछ देखा था, या इसके आसपास कभी किसी को कुछ सुना था, कुछ देखा था, इस तरह का कैरेक्टर। एक नैगी, इरिटेटेड अंकल जो सोसाइटी में हर बच्चे से खफा रहता है, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर देखा है आपने कभी? आई एम श्योर कहीं ना कहीं हर किसी ने देखा ही होगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये आपका की है, ये आपकी चाबी है। ये सब और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ सुमन, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ यंगस्टर्स बिकॉज वो इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं अच्छे एक्टर से, विच इज वेरी गुड, दे शुड। बट उनकी आदत क्या हो जाती है कि वो उनकी कोई रोल्स लेके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं ये चीज बिल्कुल मना करती हूँ। मैं कहती हूँ कि कोई भी चरित्र कितना भी सिमिलर हो, वो एक जैसा नहीं होता है। इसलिए व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू पिक योर ओन चॉइसेस। मतलब अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनसे आप एक चीज लीजिए, रादर देन कि अच्छा मैंने नेगेटिव रोल देखा है, अच्छा वो ऐसा करता है, उस चीज को लेने के, बिकॉज वो ऑर्गेनिकली उन्होंने क्रिएट किया है। आपको अपनी चीज जो है ऑर्गेनिकली क्रिएट करना चाहिए। मैं ये वॉइस एक्टिंग की बात कर रही हूँ। डबिंग में तो फिर भी आपको उस पर डिपेंड करना होता है। वॉइस एक्टिंग और जनरली एक्टिंग दोनों। एक चीज, हाँ दोनों में ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर ओन कैरेक्टर इन द सेंस कि आपको अगर कोई चरित्र दिया है कि आपके नजर में जो लोग हैं उनसे आप वो चीज लीजिए, रादर देन किसी ने किया है उसके जैसा इसके जैसा। ब्रीफिंग देने के वक्त लोग ये बोल सकते हैं, बट यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। उसमें क्या होगा, एक तो आप कुछ भी करके उस जैसा नहीं कर सकते, ओके। और लोग कहेंगे अच्छा ये तो उन्होंने कर चुका है। आप जो एक नई चीज ढूंढ के निकल सकते हैं वो चांस भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। उसमें शायद आपको ज्यादा वर्क करना पड़े, फिर भी आई वुड सजेस्ट, आई वुड ऑलवेज से खुद ढूंढिए। खुद की जो सराउंडिंग्स है, खुद की जो नजरिया है, उसमें क्या होगा, एज ए आर्टिस्ट ऑल्सो आप ग्रो करेंगे। एम आई मेकिंग सेंस? एम आई राइट? मतलब सही एग्जैक्टली, सही बोल रही हूँ? एग्जैक्टली। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जैसा स्वरूपा ने अभी भी कहा कि आप किसी और
एग्जिस्टिंग एक्टर को अगर आप उनके स्टाइल को इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं तो आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप बल्कि जितना अच्छा उनको कॉपी करेंगे, लोग उतना ज्यादा बोलेंगे कि ये तो शाहरुख का कॉपी है, ये उसका तो कॉपी, उसका कॉपी इसका है, कॉपी। इसका कॉपी है। सो वो मत कीजिए, अपना स्टाइल डेवलप कीजिए, जैसा कि स्वरूपा ने कहा। और वो उसी तरह से हो सकता है कि जब आप अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनकी लिमिटेशन होती है। जैसे स्वरूपा ने कहा कि कुछ आवाजें होती है, उनका रेंज एक फिक्स रेंज होता है, तो उस रेंज से बाहर वो नहीं कर पाते। लेकिन फिर क्या, फिर वो ऑब्जर्वेशन जो है ना, फिर क्या होता है, आवाज नहीं होती, फिर बोलने का तरीका होता है, वो बदल सकता है, वो उसमें नयापन आ सकता है। मैं एक बार मैं कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ जब मैंने काम किया तो मैंने ये चीज सीखी उनसे भी, उनके साथ काम करके ये समझ में आया कि हाँ, मेरी आवाज, मुझे एक बहुत अच्छे एक्टर ने बोला था कि मेरी आवाज की लिमिटेशन है सुमंतो, तो मैं इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ये मेरा रेंज है और मैं इस रेंज में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, इससे बाहर जाता हूँ तो मुझे डिस्कम्फर्ट होता है। ओके, डन। फिर उन्होंने क्या किया, उस रेंज में ही एक कैरेक्टर लाके दिया मुझे, जो कि कहीं से उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने मुझे बताया किसी ट्रेन के सफर में उन्होंने एक कैरेक्टर देखा था ऐसा, तो उस चीज को उन्होंने उस कैरेक्टर के अंदर लेके आए और वो बिल्कुल अलग साउंड किया। हमें पता चल रहा था कि यही एक्टर है, लेकिन एकदम डिफरेंट स्टाइल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पान सिंह तोमर में जो इरफान खान ने किया है, वो माइंड ब्लोइंग। वही आवाज थी, आप आवाज सुन के मीलों दूर से कह सकते हैं कि इरफान खान की आवाज है, लेकिन स्टाइल जो उन्होंने पिकअप किया, वो एक उस पूरे कैरेक्टर को उसने एकदम डिफाइन कर दिया, पूरे कैरेक्टर को एकदम मतलब स्पेल आउट कर दिया, इतना ब्राइटन कर दिया उस कैरेक्टर को कि हमें मजा आ गया, जिसने भी देखा वो मजा आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को जो है वो हर आर्टिस्ट के पास, मैं कहता हूँ, एक तीसरी आंख होती है, और वो उस आंख को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। वो ऑब्जर्वेशन वाली आंख होती है, जिससे आप माइन्यूटली देखते रहते हैं कि कौन क्या करता है, किसके क्या टिक्स हैं, किसकी क्या आदतें हैं, क्या हम वो चीजें अपने अंदर ला सकते हैं। वो घर से ही शुरू होता है, घर, पड़ोस, सोसाइटी, और फिर ऑफिस, और फिर बाहर जहां भी आप जाते हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए। और अच्छा, ये स्वरूपा के यहाँ से आ रही है क्या आवाज? हाँ, थोड़ा सा। आई एम वेरी सॉरी अबाउट नो दिस नो नो बिकॉज प्रॉब्लम, मुझे लगा बीच में कोई I'm very stop है। sorry about it नो नो, because नॉट एट ऑल, नॉट एट everybody ऑल। is getting इस prepared for the show and I'm in between because there's अच्छा, other कहीं पर भी वो नहीं है, मतलब नेटवर्क नहीं है। just a second विक्रम, थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, ओके, हाँ, सॉरी सो सॉरी अबाउट दिस, नो नो, पर ये नॉट अ प्रॉब्लम स्वरूपा, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल हम्म, राइट। सो तो इसलिए वो चीजें तो मैं आई विल गो बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जब हम एनिमेशन करते हैं, हम चार अलग अलग आवाजें निकाल लेते हैं और हमको लगता है कि हमने चार अलग अलग कैरेक्टर प्ले किए। Go back, go back to what I said, and now understand that we haven't played different characters. We have just delivered the four different different voices. voice. They are not the characters. They may suit, they may ये है। not suit, but they are four different voices, not four different characters. क्या मैं एक चीज इसमें ऐड कर Please, सकती हूँ please, सुमंतो, टू please. अंडरस्टैंड दिस? मान लीजिए किसी की वॉइस जो है वो बहुत ही महीन है, ठीक है, या किसी के वॉइस में कैकलिंग से साउंड है ना, ये इंसान जब डिफरेंट इमोशंस प्ले करेंगे तो वो भी अलग होगा। वन, सेकेंडली, वो कहाँ पर बड़े हुए हैं, कहाँ पर पले बड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो इमोशन कितना बाहर निकलेगा, कितना अंदर छुपा के बोलेगा।
सो अगर हम इस डिटेलिंग में जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सुमन तो क्या कहना चाह रहा है कि अलग वॉइस इज नॉट इनफ। हर चरित्र का एक अपना अपना तरीका होता है रोने का, हंसने का, और वो आवाज अगर एक हो फिर भी अलग हो सकता है, आवाज अलग हो तो भी अलग हो सकता है। तो ये चीजें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग सुमंतो? नो, एब्सोल्युटली राइट, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि ये समझना बहुत जरूरी है कि आपने क्या किया है। तो इसलिए जो आप बेसिक एक्सरसाइजेस अपने वॉइस को, या एक एक्टर अपने आप को यू नो प्रैक्टिस करता रहता है, तो वो जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए, वो ये है कि आज मैंने कौन सा कैरेक्टर किया और क्या मैं उसको, उस कैरेक्टर को किसी तरह से अपने स्टाइल में उसको ला सकता हूँ। यू नो, देखिए एक एक्टर क्या है, एक एक्टर है पानी है, दूध है, उसमें आप रूह अफ़ज़ा मिलाएंगे तो वो शरबत बन जाएगा, उसमें आप विस्की मिलाएंगे तो पैक बन जाएगा। तो वो अ, आपका फॉर्म है, आप क्या मिला रहे हैं, आप कितना मिला सकते हैं। तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू ऐड इन योर एक्सरसाइज। अगर आप रोज रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जो मुझे लगता है करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देखिए ना, एक स्पोर्ट्समैन, वो मैच खेलने से पहले वो प्रिपरेशन करता रहता है, कंटिन्यूसली करता रहता है। एक सिंगर को देखिए, वो रियाज रोज करता है। बट हम एक्टर्स, वॉइस एक्टर्स क्या है, आलसी, हम नहीं करते, हम रियाज नहीं करते। बहुत रेयरली, मेरे ख्याल से गिन के दो हाथों की उंगलियों में आ जाएंगे ऐसे लोग जो रोज उठ के रियाज करते हैं अपनी आवाज के लिए, अपनी एक्टिंग के लिए। यस, तीन चीजें मैं जरूर करती हूँ सुमंतो। वन इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर वॉइस, और क्योंकि मुझे गाना पसंद है, वो लोगों के सामने गाने लायक नहीं है, पर मैं सुर प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरी आवाज देख सकती हूँ मैं कहाँ तक पहुंच पा रहा है। सो ये दो चीजें इंक्लूडेड है मेरे एक्सरसाइज में, एंड मैं हर एक को बोलती हूँ ये करो, बाकी कुछ ना कर सकते हो तो ये करो, और कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ के आवाजें सुनो। हो गया बिल्कुल। 3। चौथा एक चीज जो हमारे, मैं बहुत साल पहले किसी एक फॉरेन डायरेक्टर से सीखा था थिएटर में, कि अपने बॉडी को क्रुकेट करके डिफरेंट पोजीशन में लेके टू सी फ्रॉम द हाउ इज इट इफेक्टिंग माय वॉइस। लाइक अगर मैं करेक्ट। चेस्ट को ऐसा करूं, अगर मैं ऐसे पीछे की तरफ रहूं, अगर मैं गर्दन को ऐसे करूं, टू सी विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर कि वॉइस कहाँ से निकल रहा है। देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सी जगह है अपने वॉइस में जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज अपने वॉइस को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग इट कि मैं कर सकता हूँ। हम लंबी रेस के घोड़े अगर बनना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर वॉइस टू। दैट इज व्हाट आई सेड। बहुत That's what सही I कहा wanted to ये say. चीज। नो नो, इट्स अ वेरी इंसाइटफुल थिंग विच यू हैव सेड स्वरूपा, कि ये जो बॉडी लैंग्वेज के साथ जिस तरह से आवाजें निकलती हैं, आप देखिए, जब आप खड़े होके कोई डायलॉग डिलीवर करते हैं, या कोई बैठ के डायलॉग डिलीवर करते हैं, या आप, वो डिफरेंस आता है आवाज में वो थ्रो में वो डिफरेंस आता है। वैसे ही अगर आप, ये जो स्वरूपा ने कहा है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये, बहुत अच्छा ये भी एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर क्राउच करके बैठे हैं और आप देखते हैं, आप बोल के देखिए एक ही डायलॉग की, उसको उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको सुनाई देगा। आजकल तो मोबाइल फोन्स हाथ में, रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए किस तरह का साउंड सुनाई देता है। आप योगा के पोजेस में, आप डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में डायलॉग बोल के देखिए आवाज कैसे निकलती है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, आपको वैसा करके भी ना कोई चीज एक अलग तिकड़म निकल जाती है आवाज में। आप हाँ, कभी क्योंकि मान खुद लीजिए भी किस, हम
आप नहीं जानते खुद भी कि हम आपके कई बार अंदर अवेयर नहीं होते हैं कि हाँ मेरे बिल्कुल अंदर बिल्कुल क्या होता है, हम डर के मारे में अचानक अरे ये तो कभी सोचा ही नहीं था, वो निकल जाता है एंड देन यू रियली बिल्कुल। अंडरस्टैंड कि वो है तो ओवर कॉन्फिडेंट इज रॉन्ग, ओवर बिकमिंग ओवर ब्रेव एंड थ्रोइंग योर वॉइस टू अ पॉइंट जहाँ पे वॉइस खराब होता है, वो जैसा गलत है। डर के मारे ना निकलना भी गलत है। सो बिल्कुल। वन हैज टू फाइंड अ बैलेंस इन बिटवीन। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस, रीसेंट एनेक्डोट आपको देता हूँ कि वक्त के साथ साथ सिनेमा में हो या डबिंग में हो, आप लोगों ने देखा होगा स्टाइल ऑफ डिलीवरी इज चेंजिंग। बदलाव आता जा रहा है। हम 80s में बहुत लाउड एक्टिंग किया करते थे। 90s में हम जब तक आए तो एक्टिंग में स्लैपस्टिक बहुत ज्यादा जुड़ा। तो जो भी कॉमेडी होती थी स्लैपस्टिक कॉमेडी होती थी। आज हम जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो बहुत अंडर प्ले करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस। तो बदलाव आता जा रहा है और वक्त के साथ बदलाव आता जाएगा। नाउ if you are a good actor, if you are a good voice actor, तो आप उसके साथ बदलाव कर भी सकते हैं और आप हर चीज कर सकते हैं। मैं रिसेंटली आई वाज शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज जहां पे इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर। सो नेगेटिव कैरेक्टर में मैंने डायरेक्टर से डिस्कस किया। डायरेक्टर ने मुझे पहले बोला कि पहले मुझे आप बताइए करके कि आपने किस तरह से कंसीव किया है इस कैरेक्टर को, उसके बाद विल हैव अ डिस्कशन। सो आई डिड माय पार्ट। मैंने एक सीन उनको करके दिखाया ऑन सेट, क्योंकि जो आजकल का ट्रेंड है, जिस तरह की एक्टिंग, जिस तरह की परफॉर्मेंस, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस होता है, अंडर टुडेज एक्टिंग इज नो एक्टिंग बेसिकली। सो वो उस तरह का मैंने एक परफॉर्मेंस दिखाया। माय डायरेक्टर सेड कि ऑसम सर, बट एक काम कीजिए, आप इसको इसके अंदर 10% ओवर द टॉप डाल दीजिए। आई आस्क्ड हिम क्यों? उन्होंने बोला बिकॉज सीक्वेंस ऐसा है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अ फिल्म इन द वेब सीरीज। सो आई वांट to make a difference between my regular web series which is happening and the film which is a part of this web series. So I need a little over the top performance. So then I delivered over the top. उसको कितना बैलेंस करना था डायरेक्टर ने मुझे समझाया एंड आई कुड डिलीवर इट। बट द थिंग इज कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप कॉन्स्टेंटली इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, इस तरह का ऑब्जर्वेशन कंज्यूम करेंगे कि आप हमेशा देख रहे हैं, सीख रहे हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग, प्लीज, फॉर गॉड सेक, नेवर स्टॉप लर्निंग। अपना लर्निंग वाला जो दरवाजा है ना वो हमेशा खुला रखिए। दरवाजा, विंडो, वेंटिलेटर जो भी है उस कमरे का, लर्निंग वाले कमरे का, वो हमेशा खुला रखिए कि कहाँ से क्या घुस जाएगा ना आप, और वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो एक कैरेक्टर आपने प्ले किया जो मतलब जिंदगी भर के लिए मेमोरेबल हो सकता है। तो वो हमेशा ओपन रहिए, सीखने के लिए ओपन रहिए। हम भी स्वरूपा है, वी ऑल आर, हेलो। हाँ, वी आर बैक। वी ऑल कीप लर्निंग। हम नई चीज देखते हैं, नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक हम वापस आते हैं कि एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज चाहिए कि ये कैरेक्टर जो है ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये क्या करता है, ये इसकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, इसकी इकोनॉमिकल स्टैंडिंग क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है। ये ये सारी चीजें जो है ये आपको जब एक बार समझ में आ जाती है, और फिर जब कैरेक्टर समझ में आता है, वो कैरेक्टर अब इस सीन में, इस पर्टिकुलर सीन में जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे क्या है। एक कैरेक्टर हो सकता है जो कि बहुत स्ट्रांग है, वो पॉसिबली रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो या एक्स आर्मी मैन है या रोग फोर्स का आदमी है, लेकिन और बहुत स्ट्रांग है, किसी से हारता नहीं, लेकिन हो सकता है सिचुएशन ऐसी है इस वक्त
कि ही हैज गिवन अप। तो ये आपका सेकंड स्टेप है कि वो सिचुएशन क्या है। तो आप जब उस सिचुएशन को समझ जाएंगे और आप जब इस कैरेक्टर को समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। अगर एक Can I add something, प्लीज Sumanto? प्लीज सुनो। Uh, it's a very simple thing. What she is saying is absolutely right. But कई बार क्या होता है, इनिशियली हम समझ नहीं पाते कि कैसे समझे. I always tell this to most of the youngsters is that there's a magic W. Magic W is whenever you see a character, ask yourself where, when, why, what. ये कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं. You will get the how out of. क्योंकि ये चार क्वेश्चन की अगर आप अंदर तक घुसेंगे, आपको जो इंफॉर्मेशन सुमंतो बता रहे हैं वो अपने आप निकल के आएगा. राइट सुमंतो? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये चीज जो आपने अभी बताया स्वरूपा, इट्स दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर फॉर एवरी एक्टर, एवरी वॉइस एक्टर। हम स्क्रीन क्यों, जब हम ऑडियो पे ऑडियो ड्रामास करने जाते हैं तब भी हमको एक कैरेक्टर पकड़ना होता है। सो एंड अगेन वो कैरेक्टर पकड़ना होता है, वो वॉइस चेंज करना नहीं। सो वो एक अलग चीज है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। So these four W's, if you get the answer of these four W's, you will get the answer of how to do it. This is this is it. So इसके अलावा हाँ, और मैं ये इस बात पे मैं जोर देता रहूंगा हमेशा कि थोड़ा वक्त निकाल, 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए, अपनी कला के लिए जो आपको कमा के खिला रहा है उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, चाहे फिजिकल प्रैक्टिस हो, वोकल प्रैक्टिस हो, बट थोड़ा सा सोशल मीडिया से टाइम हटा के सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो बल्कि इट्स अ ग्रेट आइडिया ऑफ अ कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। प्रैक्टिस कीजिए, शूट कीजिए, डालिए सोशल मीडिया पे कि ये कर रहा हूँ। लेट पीपल सी दैट, इंस्पायर पीपल दैट यू आर डूइंग समथिंग which is meaningful. Practice बहुत जरूरी है। Swarupa, do you want to add something or shall we get into the Q&A session? I think we have covered the most important points, Sumanto. If we put more, then people will get confused. I think आपने बहुत अच्छी तरह उसका जो लेवलिंग है समझा चुके हैं. And also this is a first session. हम आगे भी काम करेंगे. So I think it's better to open the floor for the question and answer. And मैं माफी चाहती हूँ पर मुझे अभी जाना पड़ेगा. And nobody can answer the questions better than you. And No problem, thank you Swarupa. all All the the best for viewers. your play. Believe me, thank you, thank you. मैं मन तो करता था कि इधर बैठी रहो, पर वो आज हो नहीं सकता है क्योंकि सुमंतो से प्लीज एक चीज, सवाल जितना पूछना है पूछ लीजिए क्योंकि सुमंतो से अच्छा ट्रेनर इन वॉइस एरिया आई हैव नेवर फाउंड. इस उम्र में आके अगर मैं इस आवाज में बात कर पा रही हूँ, that is due to Sumanto. Thank you so much. It's been an honor to be It's here. been an honor, Thank you, Swarupa, Darpan. for sharing. Thank you, Darpan, for considering me, bringing me here. And let me tell you all, last year अगर मैंने award जीता था, वो सुमंतो और मंचा के लिए. अगर वो नहीं होते तो वो award भी मेरे हिस्से में नहीं आता. Thank you. Thank you. Lots of love. Have a great evening. Bye. So, Darpan, are you there? Darpan, are you there? Hello. I can see you are in the show. Everyone can see and hear you. Darpan, can you hear me? So, well, अभी मैं तो यही चाहूंगा कि if you can take some questions and if I can answer some of your queries, some of the questions, and it will be
really great, but I need someone to show me the questions because I cannot see the questions. So, चलिए जब तक दर्पण is Darpan joins back, I would like to share this information if it is of any use. People, actors, voice actors who are in Bombay, for them, let me tell you one thing. I am doing a 2-day workshop on voice acting and characterization, a detailed 2-day workshop with Mukti Manch. So, uh, if you want, if you feel like that you want to know more about it, more details about this training, then please join me. And the details you can go to my Instagram or Facebook profile or Mukti Manch Instagram or Facebook profile, and you know and connect and get more details about it. Darpan, if you are back, then please let me know. Yes, I can see. Yes, Darpan. Absolutely, I'm back, Shamanto, and I was waiting for you to finish. I'm really happy that you're speaking about the workshop that you're doing. And in fact, I remember when I was speaking to you earlier, मैंने भी आपसे कहा था कि आप इतने कमाल की ट्रेनिंग्स करते हैं, तो क्यों ना आप इस सेशन के दौरान जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताएं कि आपका अगला वर्कशॉप कब हो रहा है. तो 19 और 20 दिसंबर को. Yeah, 19th and 20th And where can, December. हाँ जी, तो इसकी डिटेल्स कहाँ मिलेंगी शुमांतो? आप मुक्ति मंच ये मुंबई में हो रहा है, राइट? मुक्ति मंच मुंबई के मुंबई में अंधेरी वर्सोवा में अंधेरी है. अंधेरी. हाँ हाँ, जी, हाँ जी. अंधेरी वर्सोवा में है. इट्स अ नाइस closed theater and training place. Okay, It's okay, run by an actor, dancer, Mukti Mohan. I think okay. Of everybody course, of knows. course, So of course. she's running this, or I'm doing a 2-day session with them on 19th Okay, and 20th. If anybody wants to join, आप मेरे Instagram पे मुझे पिंग कर दीजिए या फिर मुक्ति मंच के Instagram पे पिंग कर दीजिए. They will get in touch with you. शुमांतो, अपना इंस्टा हैंडल for everyone's benefit, why don't you tell us your Insta handle? My Insta handle is Ray Sumanto Actor. It's RaySumanto Okay, Actor, ACTOR. That is my Insta handle. perfect. Perfect. So everyone who's watching right now or watching it later, you know the Insta handle to follow now. And 19 और 20 तारीख को इनकी वर्कशॉप हो रही है. शुमांतो, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा. और स्वरूपा, अनफॉर्चुनेटली मैं उनको मिल नहीं पाया अभी क्योंकि शी हैड टू रश एंड शी हैड सम बैड नेटवर्क. बट जो सवाल आ रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं एक सवाल आपसे जो मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, if you allow me to ask you. Please. Zubin Engineer is asking a very usual question, a very common question: how to get rid of mother tongue influence? Asked by many actors repeatedly. I think he means that ये बहुत एक regular सवाल है. So what are your views on this? देखिए, आपका मदर टंग जो है ना, उससे आप हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते. पहले तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा दीजिए. मेरी हिंदी साफ है, लेकिन क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो आज भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गड़बड़ कर दूँ. दैट्स प्लीज, ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन मेरी हिंदी साफ इसलिए भी है क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने हिंदी सिनेमा को देखा है, बहुत देखा है, बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है. आप किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर आप मतलब आप अगर किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो उस लैंग्वेज को पढ़ने के अलावा उसको आपको सुनना बहुत जरूरी है. और जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उच्चारण कैसे किया जाता है किसी चीज का, और आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड मैं ऐसे बोलता हूं और ये बोला ऐसे जाता है. सो बहुत बड़ा साइंस नहीं है, नासा की जरूरत नहीं है इसके लिए. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है
और वो है सुनी, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज की डेट में इतने सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, एप्स हैं जहां आप सुन सकते हैं। अगर आपकी हिंदी में प्रॉब्लम है, मदर टंग आ रहा है, आप उसको सुनिए। सुन के अगर आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, रिकॉर्ड कीजिए, खुद को देखिए। अगर कोई जानकार है आपके आसपास, उनको सुनाइए कि क्या ये ठीक है, या कहीं मेरा उच्चारण में, कहीं डिक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, यू हैव टू गिव योर क्राफ्ट टाइम। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, प्रैक्टिस। अगर आपका ये वीक पॉइंट है तो इस पे आप ज्यादा समय दीजिए, इसको ज्यादा वक्त दीजिए, और वक्त देंगे तो आप सब ठीक हो जाएगा। Absolutely, Shumanto. I think when we talk of learning a language, even if we take a few steps back and remember how we started learning how to speak, जब हम 1-2 साल के होते हैं, जब आमतौर पर अमूमन बच्चा बोलना शुरू करता है, we learn to speak by listening. हमारे आसपास के माहौल का जो साउंड है उसको सुनकर हम अब्जॉर्ब करते हैं। और उसी तरह आई थिंक व्हेन वी टॉक ऑफ मदर टंग इन्फ्लुएंस, आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी कि इसके 2 भाग हैं। अगर आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर आप बिहार से हैं और आपकी जबान में बिहारी भाषा की इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज्यादा नॉर्मल है और वो होनी ही चाहिए। अगर आप पंकज त्रिपाठी हैं, तो अगर आपको रोल मिला है किसी ऐसे शख्स का जो बुनियादी तौर पर बिहार से है, तो पंकज त्रिपाठी को आप शायद कास्ट करने की सोचेंगे, क्योंकि उनकी जो बोलने का लहजा है, जो अंदाज है, वो फिट बैठता है उस कैरेक्टर में। पर अगर आप किसी ऐसे बंदे की तलाश में हैं जो अमेरिका में रहकर आया है और वर्ल्ड ट्रैवलर है और जिसकी जबान एकदम जिसकी जबान में कोई रीजन का इन्फ्लुएंस नहीं है, तब यू विल नॉट कास्ट अ पंकज त्रिपाठी। मैं एक बहुत ही एक साधारण तौर पर कह रहा हूं। सो जब आप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तब हो सकता है कि आपका जो मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, इट माइट जस्ट वर्क इन योर फेवर, बट एट द सेम टाइम अगर आप कोई एड फिल्म रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई वॉइस ओवर कर रहे हैं जहां पर ये जरूरी है कि वो नेशनल कैंपेन है, where people are not supposed to know which region you come from, तब ये भी जरूरी है कि आपकी जबान में कोई रीजनल लैंग्वेज का या जिसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं हो। So what Shimanto is saying is, if you really, one is, it is normal to have that, but if you really want to work on that, listen to people who speak that language without any regional influence. The more you listen, the more your mind will absorb, and the more you absorb, the more your memory will retain that. And obviously the next step is to speak, क्योंकि खाली सुन के तो बच्चा भी बोलना नहीं सीखता है, सुनने के बाद उसको भी बोलना पड़ता है। तो आई थिंक ये, बट ये आपने बड़ी अच्छी इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल यू हैव गिवन, दर्पण, कि हम जब छोटे होते हैं तो अगर हमको मम्मी बोलती है बोलो मम्मी, तो हम मम्मी बोलना सीखते हैं, हम सुन के ही सीखते हैं। दैट इज हाउ वी स्टार्ट लर्न। और मेरे ख्याल से वो चीज हम भूल जाते हैं in the long run. Like another thing which I have seen, that when I ask workshops में, let's do breathing exercise, people don't know, people have forgotten how to breathe. और मैं बोलता हूँ कि एक बच्चे को कभी ऑब्जर्व करना, वो कैसे सांस लेता है, वो सीख के आया है सांस लेना, और वही सांस हमको लेना है, वैसा ही लेना है हमको सांस। और अगर हम वैसा सांस लेते रहे तो बहुत सारी चीजों से हमको छुटकारा मिल जाता है और बहुत सारी नई चीजें आ जाती हैं। And similarly, we sometimes forget the basics of it. और ये वही है कि आप सुने, जितना कंटेंट सुन पाते हैं, अगर आपकी हिंदी में या आपकी अंग्रेजी में उस तरह का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो उस भाषा को सुने और फिर उस पे प्रैक्टिस करें, उस पे काम करें, तो you'll be fine. You brought up a very very interesting, I'm sorry I'm taking some time, but मुझे लगता है ये आपने एक बहुत ही कमाल का पॉइंट डिस्कस किया है, वो है ब्रीदिंग। और I just want you to help us connect breathing with character voice acting, क्योंकि जो मेरी समझ है, having spent an entire lifetime working as a voice actor, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि the breath plays a very important role, not just in living but also in living a character.
तो इस पर अगर आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें कि क्योंकि हम कैरेक्टर वॉइस एक्टिंग की बात कर रहे हैं या एक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है we need to go back to basics and it could be a great learning for everyone कि how does one need to be mindful, how important it is to be mindful about how your character will breathe in a particular scene. अगर वो कैरेक्टर पहाड़ पे दौड़ रहा है, चढ़ाई कर रहा है, और अगर आप उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑडियो में तो हमारे पास लग्जरी नहीं है कि हम सच में भागे पहाड़ पर, हमको तो वो 4 फीट बाय 5 फीट के वॉइस बूथ में ही हमको रिक्रिएट करना है। हाँ जी, तो वो कैरेक्टर उसको डिफाइन करने के लिए उसका ब्रेथ, उस कैरेक्टर का ब्रेथ पकड़ना कितना जरूरी है, या फिर अगर आप कोई ऐसा सीन कर रहे हैं जहां पर आपको एक सेंशुअस स्टाइल में बात करनी है, या आपको किसी को रिझाना है, या यू हैव टू स्पीक इन अ सेडक्टिव फैशन विद यूजिंग दैट इमोशन, तो ऐसे में हाउ द सेम ब्रीदिंग will change dramatically. जैसे मैं कई बार शुभांशु एक एग्जांपल देता हूं कि आप जब इन साधु संतों को देखते हैं जो ये योग की बातें करते हैं या जो लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम यू विल सी देम स्पीकिंग एट अ वेरी लोअर नोट एंड टॉकिंग अबाउट बीइंग काम, एंड आई रियलाइज बिकॉज एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ द क्राफ्ट मैं उसको एनालाइज कर पाता हूं कि दे आर also mindful about how they are breathing to bring about a certain voice. So I want your views on this, please. See, Darpan, what happens is if you see again going back to the basics कि हम वॉइस आर्टिस्ट क्या करते हैं जब हमको स्क्रिप्ट मिलता है तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज हम पॉजेस मार्क करना शुरू करते हैं, दैट्स व्हाट वी डू. सो आप पॉजेस जब मार्क करते हैं, कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यार ये लंबा सेंटेंस है और यहाँ अगर मैंने पॉज मार्क किया तो मेरी सांस टूट सकती है. तो आप यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर ब्रीदिंग ऑल द टाइम. So from there, that's the basic of marking pauses according to your breathing power, or if you are regular practitioner of breathing exercises, then what happens is you don't care how much you don't care about your breath because you know that you have the stamina. Then you go for longer sentences and mark pauses according to the situation and the character of the of the scene, not according to your breath. So Absolutely. ये यहाँ से बेसिक शुरू होता है. एंड देन एज यू जस्ट गिव एन एग्जांपल कि जब हम किसी डिवोशनल गुरु को देखते हैं, जब हम किसी रिलीजियस गुरु को देखते हैं, दे टॉक in a very, very calm way because that's what they want to do. They want to calm down. They want to uh, tell people that this is a safe zone. आप जहाँ पे हैं वो बहुत सेफ जोन है. यहाँ आपको किस तरह का स्ट्रेस, किस तरह की परेशानी नहीं छू सकती. दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट्स हाउ कीपिंग देयर breath low, keeping the voice low, and the way they breathe is very, very important. Similarly, आप कभी नोटिस कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिए इस बात को मेरे कहने पे. अब आप उसका उल्टा लीजिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर से बात को देखिए, बातें वही कर रहा है. He is also inspiring you, but he will be shouting from the rooftop. वो माइक लेके भी इतना जोर से चिल्लाएगा क्योंकि उसका काम है आपके अंदर जोश जगा. वो उन्हीं सिचुएशन से फाइट करने के आपको अलग तरीके बता रहा है. उसका ब्रीदिंग स्टाइल अलग हो जाता है, उसका थ्रो अलग हो जाता है, क्योंकि उसका ब्रीदिंग स्टाइल अलग है, उसका थ्रो अलग है, उसका, और उसी से आपको जोश मिलता है. आप वो एक डायलॉग आया था, हाउस द जोश, वो आप यू कांट एक्सपेक्ट दैट इन अ लो वॉल्यूम और अ calmer this thing because that's not going to work. Similarly, if you want to say give a Gita Gyan, you cannot be shouting and giving Gita Gyan. So that's not going to work. So that's how important breath is. So वही मैंने जो बोला कि बेसिक वही है. आप पॉजेस जब मार्क करना शुरू करते हैं, वहीं से आपका ब्रीदिंग का खेल शुरू हो गया. बिल्कुल. एक एग्जाम्पल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग याद आया जो मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में दोहराता हूँ, कई बार, 50 बार,
और ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि this is related to radio, which has been such an important part of your life. You've headed radio stations as creative head. And ये मैं मेरे जो workshops होते हैं या trainings वगैरह और whenever I speak about the craft, I usually give this example of a radio anchor. A radio anchor, when he or she is performing a morning drive time show, when you are speaking, the same anchor speaking for a morning drive time show speaks in a completely different way. And the same anchor, when he or she is hosting a ghazal program at 11 p.m. at night, the same anchor with the same voice is sounding completely different. क्योंकि जैसा आपने कहा, जो आपने डिवोशनल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर का एग्जांपल दिया, सो रात को हम डिवोशनल गुरु बन जाते हैं in that sense because we want to calm people down. लोग थक कर आए हैं, तो हमें हमारी आवाज, हमारी टोन, हमारी पिच, हमारे नोट से हमको उनको और उकसाना नहीं है, मगर सवेरे वाला जो बंदा या बंदी है, सवेरे आप नए दिन नए जोश के साथ निकले हैं, तो उनको आपको तो सुबह के गाने भी तड़क भड़क होते हैं. सुबह आपको हार्डली सवेरे 9 बजे आपको होश वालों को खबर किया किसी स्टेशन पर नहीं मिलेगा ज्यादातर, है ना. आपको रात को जरूर मिल जाएगा. सो कितना कमाल का कनेक्शन है. मैं हमेशा कहता हूँ वॉइस एक्टिंग जो है ये एक साइंस भी है, आर्ट भी है, और ये आपका मैनिपुलेशन भी है. So voice acting is the craft of manipulating you, the listener, to react in a certain way that we want you to react. And these examples that you've given are absolutely amazing. Shumanto, I have a very interesting question. Please. From Vasudha. She says she wants to know what's a good trick. Trick as a word, I will not take that, Vasudha. मुझे लगता है the word should be technique. Trick तो होता है ना, जुगाड़ में होता है. So what's a good technique to perform an emotionally intense or heavy scene without necessarily having to recollect a similar instance from your past? तो अपने माजी, अपने पास्ट में से किसी चीज को recollect किए बिना, can you still create an emotional space to deliver a certain emotion? See, जब हम बात करते हैं वसुधा कि ये to remember something of your own, that's what we call in nutshell, in short, that's what we call method acting. In method acting, you start remembering your past and try to pick up an incident which will help you to perform or to reach that stage. But not everybody is a method actor. Okay. So then what you do? Then what we are discussing for last 1 hour is picking up that character and becoming that character. उस कैरेक्टर को आप जब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो इमोशंस कोई भी हो, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि उसको परफॉर्म करना कि ठीक है. तब आप देन यू डोंट रिमेन एन एक्टर, you become that character. जैसे स्वरूपा ने बोला था, character is a human being. You become that human being. उसके लिए आप अपने आप को रिलेट मत कीजिए. अगर आपसे नहीं होता मत कीजिए. It is not the only formula of acting. So don't do that. Get into that character. So there are two kinds of actors, let me tell you, like in a broader way. उसके सब स्टाइल्स बहुत हैं, लेकिन दो तरह के कैरेक्टर होते हैं. एक होता है कि ये मेरा स्टाइल और इस कैरेक्टर को जो मुझे दिया गया है इसको मैं अपने स्टाइल में डाल दूंगा. ठीक है. दूसरा कैरेक्टर होता है कि आई डोंट बॉदर अबाउट माय स्टाइल, दिस इज द कैरेक्टर, आई एम गोइंग टू लिव दैट कैरेक्टर. वो जो मैंने बोला ना, वो हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो कहां से आया है, क्या सोशल स्टेटस है, क्या करता है, इस वक्त क्या कर रहा है, मैं वो सारी चीजें समझूंगा. और वो एक बार मेरे समझ में आ जाती है, फिर मैं वहीं पहुंचूंगा उसी सीन में, वही कैरेक्टर बन के, उसकी आत्मा बन के मैं उस चीज को परफॉर्म करूं. सो यही हमारा मकसद था इसी चीज को. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, but this is exactly the whole session was the answer of this question. Get into the character, understand the character. Brilliant, very good question, Vasudha, and brilliantly taken by Shumanto Ray.
We have a question from Roshni Patra. She says she is a person with vision impairment. कह रही है कि कैरेक्टर वॉइस और वोकैबुलरी वगैरह तो ठीक है, पर डबिंग में जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको दिक्कत फॉर ऑब्वियस रीजंस आती हैं. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका जवाब नहीं है. मैं ज़रूर मेरी दोस्त मोना शेट्टी या राजश्री शर्मा जो ये काम बहुत अच्छा करते हैं, जिनकी कंपनीज ये काम करते हैं, मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा if there is any support of braille in any way in which visually impaired people can also find a way to dub or to lip sync. Shumanta, do you have anything to say on this? I'm sorry, I'm not. I don't have an answer for this. See, I'll give you one example. That there are a lot of actors when it comes to dubbing, तो कुछ exact sync कर देते हैं और कुछ follow करते हैं. बहुत सारे voice actors follow करते हैं. They listen to the sentence and start following it. Yeah. So तब using short term memory को use करके, short term memory use करके आप सुनते जाइए, बोलते जाइए आप, और ये बहुत मुश्किल नहीं है. बहुत सारे मतलब रेगुलर वॉइस एक्टर्स ये करते हैं. That is their style of doing it. They use the short term memory. ये sentence सुना exactly वैसे बोल दिया. So fair. that is possible. Now, yes, when it comes to because you may be dubbing for a different language, then you need the script to be in braille. Otherwise, you won't know what line has to be spoken. So that is, from what I understand, is use of braille for script understanding, but for the lip sync part, you can use short-term memory and do the follow syncing. So right. That is I what I hope you got that answer, रोशनी. हाँ, but रोशनी, मैं आपको एक बात, अगर आप देख रही हैं, आपने लिखा कि कैरेक्टर वॉइस और वोकैबुलरी तो ठीक है, और ठीक नहीं है. तो ये मैं एक चीज ना, मैं जितने भी आज यंग एंड एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, आई एम श्योर आपके साथ भी ये होता होगा. लोग आके पूछते हैं कि अच्छा काम तो सीख लेंगे, आप बताइए उसके बाद काम मिलेगा कैसे. तो ये मेरे साथ बहुत होता है. अच्छा काम सीख लिया फिर, तो मैं बड़ा दो टूक जवाब देता हूं कि फिर आप आना, फिर बात करेंगे. तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं ना कि कैरेक्टर वॉइस एक्टिंग और वोकैबुलरी तो ठीक है, ठीक नहीं है, उस पर पहले काम करिए, क्योंकि जिंदगी निकल जाती है कई बार अपनी भाषा ठीक करने में, और जिसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन को समझने में. और आप ये जो वॉइस एक्टिंग का काम है, ये एक ऐसी गाड़ी चलाने जैसा है जिसमें 6-7 पेडल हो. 2 पेडल नहीं, एक्सेलरेटर और क्लच या ब्रेक नहीं, आपको 6-7 पेडल होते हैं, और आपको सबको इक्वल मात्रा में रिलीज करना है और प्रेस करना है, तब जाके वॉइस एक्टिंग की गाड़ी आगे बढ़ेगी. तो आपकी कितनी भी शानदार, जानदार, दमदार, सुरीली आवाज हो, अगर आपने बोलते वक्त जिंदगी को जिंदगी कह दिया, तो सारी आवाज धरी की धरी रह जाएगी. और आपकी कितनी भी अच्छी भाषा हो, आप कहीं से भी एजुकेटेड हो, आपकी अंग्रेजी एकदम फराटेदार हो, पर अगर किसी लाइन में आपको मुस्कुराता हुआ सुनाई देना है, and if you cannot bring that emotion in your voice, then all your language will be absolutely of no avail. कुछ मतलब ही नहीं रहेगा. So it's a package deal. So I think I'm sure Shumantu, you will join me in this, that पहले work on the craft first. In the beginning only I said that there are 3 kinds of voicing style, and it is not necessary that everybody is good in everything. So जैसा दर्पण आपने कहा कि हाँ आपकी लैंग्वेज, लाइक बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स हैं who have great command over the language they speak, but they can do voiceovers. Correct. Dubbing कर रहे हैं वो सेम चीज, क्योंकि वो इमोशंस, कैरेक्टर पकड़ना, वो चीज, वो दैट्स दिस थिंग. सो अगर आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है, वॉइस एक्टर बनना है, तो यू हैव टू put equal importance to every little aspect of it. That's the point. You have to put equal importance. Beautifully said. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है शुमंतो. जावेद हैं, ये पूछ रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं इसको, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये मैं हर अगले दिन देखता हूँ.
ये कह रहे हैं सर मेरी आवाज में अग्रेसिवनेस ज्यादा आती है जब मैं एक रोमांटिक या सॉफ्ट सीन करना चाहता हूँ तब थोड़ा अग्रेसिव साउंड करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ फिर भी रोमांस में थोड़ा अग्रेशन आ जाता है। आपकी गर्लफ्रेंड कैसे मैनेज करती है इसको? पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आई एम वेरी हैप्पी जावेद आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि हम आई एम श्योर शुमांतो के पास भी इसका जवाब है। मेरे पास भी आई हैव टू थिंग्स टू से अबाउट इट, बट आई वांट शुमांतो टू प्लीज एड्रेस दिस। ये वॉइस में अग्रेसिवनेस का क्या करें? प्लीज योर देखिए, कमेंट्स, योर व्यूज। व्हाट आई फील इज, जावेद, दिस इज योर पर्सनालिटी। ये आपकी पर्सनालिटी है कि आपका जो प्यार है वो पैशन वाला प्यार है। मैं आपकी बात करूं तो वो पैशन जो है, जब आप कोई सीन इनैक्ट करते हैं उस सीन में भी छलक जाता है। सो दिस इज यू बिकमिंग द कैरेक्टर, ओके। और बेसिकली यू आर ट्राइंग टू मैच दैट कैरेक्टर विद योर ओन स्टाइल। उल्टा कर लीजिए, अगली बार क्या कीजिए, आप अपने आप को पीछे रखिए, अपने जज्बातों को, अपने स्टाइल को बिल्कुल पीछे रखिए और ये सोचिए कि वो कैरेक्टर क्या कर रहा है, तो आप उस चीज को इम्बाइब कर पाएंगे, उस चीज को आप अपने अंदर ला पाएंगे। इंस्टेड ऑफ यू गेटिंग इनटू दैट कैरेक्टर को लेके आइए अपने करीब, थोड़ा कदम आप बढ़ाइए और अपने आप को छुपाइए। ये आपका स्टाइल है, ये आप, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत ही पैशनेट लवर होंगे, इसीलिए वो पैशन जो है वो आपके परफॉर्मेंस में झलकता है। और ये बहुत आम बात है, बहुत लोग अपने इंप्रेशंस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में छोड़ते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि ये रोमांटिक वाले एंगल में मैं थोड़ा मार खा जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा एग्रेशन आ जाता है, तो कोशिश कीजिए अपने आप को पीछे रखिए, बैकफुट कीजिए, अपने खुद को बैकफुट कीजिए और कैरेक्टर को That's a आगे रखिए। beautiful answer. This is exactly what I had in mind. I wanted to say that this happens when your personality overtakes what you're doing. And I think there's no better way to sum up this very, very interesting session that when it comes to character voice acting, your personality has to take a back seat. And I think the entire training is about losing yourself and losing your own personality, अपने खुद के व्यक्तित्व को भुला देना और किसी और चोले को पहन लेना। आई थिंक इसी में कई बार लोगों का जीवन बीत जाता है, इसको सीखने में, on how to come across on the mic or on camera in such a way that people don't even think that you're acting. And I think that could be possibly a nice way to sum up this. Shumanto, you have been so insightful, so wise, and यही बात है कि जो लोग जिनका तजुर्बा होता है और जब तजुर्बा बात करता है तो दुनिया सुनती है. So Dada, thank you so much for doing this, and I really hope a lot of people who are watching this or now or later, let me just reiterate and remind everyone that Shumanto is doing a workshop on the 19th and 20th of December in Mumbai at Mukti Manch in Andheri, Warsaw. His Insta handle is Ray Shumanto Actor. That is RAYSUMANTO Actor. Follow him, connect with him, write to him, DM him. He is one of the most generous, giving, helpful, supportive people that you will come across in this industry. And Shumanto Da, thank you so much for doing this. And I'm looking forward to seeing you on the 17th. Everyone, if you want to meet Shumanto Ray, this man, this rock star, let me tell you one more thing about him. This man is probably the best dressed guy in the industry. So if you want to meet him, looking his Pressure most डाल दिया dapper, दर्पण। best. नहीं कुछ pressure नहीं. I've seen you over coffee also, Dada. Please. You are as immaculately dressed, and I love that about you, and we all love you. Thank you so much. I'll see you on the 17th of December at the grand finale, and thank you so much once again. We are getting ready for a very exciting session coming up next, which is a lovely chat between two legends, Chetan Sashital and advertising guru Prahlad Kakkar. I hope आप इसको भी enjoy करेंगे थोड़ी देर बाद में. And for now, thank you so much. Goodbye. Bye-bye. Thank you very much. It has been honor to be here. And thank you, Darpan, for doing this. I always keep saying this to you whenever I meet.
But thank you for India Voice Fest. Thank you from the Thank you. community of voice actors for this thing which you do. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dada. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Everyone, that was Shumanto Ray. What a stalwart, what wisdom-filled conversations. So I hope you enjoyed the acting and voice acting की masterclass with Shumanto Ray and Swarupa Ghosh. और अब से कुछ ही मिनटों में शायद आज का ही नहीं, पूरे इंडिया वॉइस फेस्ट 2023 का सबसे धमाकेदार और सबसे भारी as in literally power packed, two heavyweights of the industry, two absolute legends, Prahlad Kakkad and Chetan Sashital, are going to join us in just a few minutes. So we will take a short break, and on the other side, we have these two stalwarts joining us. So kahin mat jayega, you're watching India Voice Fest 2023. This is day 3. My name is Darpan, and I'm going to be back in just a few minutes.
It's a historical day today. First and foremost, I think it's a fantastic idea. I would like to congratulate Darrpan on organizing such a wonderful event. So the whole idea behind this event was to get people together. This is what Hollywood is encashing on. If you really want it, there's no field like this. Right from scheduling up till delivering the product, it's always a challenge. You get paid to interpret the script, not just to voice it. Full kudos to Darrpan and team for pulling off such a fantastic event. I'm just very happy and proud to be a part of this industry. पहला कदम ही इतना शानदार है. Extremely honored to be here at the India Voice Fest. I think it's a fantastic event. Darrpan is doing a great job on this. Not only thanks to Darrpan Mehta and Sugar Mediaz, congratulations to them. And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep into a paradise. How do you feel finally after 2 long years? I feel tired. Hi, I'm Mona Shetty from Sound Vision Studios. I'm very proud and excited to be the main sponsor of India Voice Fest for the 6th year in a row. I'm really looking forward to a fun-filled week of exciting sessions. I look forward to seeing you there, especially at the award ceremony on the last day. So do buy your delegate pass quickly. Go to indiavoicefest.com and get your delegate passes. See you there. Hello and good evening. Welcome to India Voice Fest 2023. India Voice Fest is India's biggest, first and only conference and awards platform dedicated to the voiceover and dubbing industry. This is India Voice Fest's 6th year and today is day 3 of this 10-day festival. 10 दिनों का ये महोत्सव शुरू हुआ है 7 दिसंबर को और चलेगा 17 दिसंबर तक. 7 से 15 तारीख तक we are having amazing online sessions, discussions, masterclasses, and workshops with industry veterans. And on the 17th is the grand finale at the Rangshad Auditorium in Mumbai, where we will present more than 40 awards to talented voice artists across different categories and languages. If you haven't got your delegate pass, this is the QR code to scan and get your delegate pass for the grand finale. And before we move on, let me quickly thank our sponsors for this year. India Voice Fest 2023, conceived and curated by yours truly, Darrpan Mehta, produced and organized by Sugar Mediaz. Our main sponsors are Sound and Vision Studios, associate sponsor Audio Magic, industry partners are MnM Talkies, Gulmohar Media, G-Corp Media, and Aural Arts. Proud supporters are Neshma Academy of Acting and Voice Acting, Surabhi, Javeri, Vyas, KRG Kreative Studio, and Skylink Freight Forwarders. And ladies and gentlemen, boys and girls, it is that time of
India Voice Fest and that time of the evening, जिसका इंतजार हम सब बहुत वक्त से कर रहे हैं. We have two absolute legends with us this evening, and I think it is going to be probably the most engaging, entertaining, wisdom-filled evening of India Voice Fest, at least this year. We have with us Prahlad Kakkad and Chetan Sashital, two absolute legends in their own right. Prahlad Kakkad, as all of you know, he is one of the founding fathers of advertising filmmaking in India with a career spanning more than 4 decades. He's been an absolute ad guru, not just a name, he's an absolute enigma. He's been instrumental in changing the face of advertising in our country, and his work has won as many hearts as awards. Recently, Prahlad added another feather to his cap of an author. Prahlad has come out with his new book, Ad Man, Madman, authored by him with Rupangi Sharma. This is a no-holds-barred memoir in which Prahlad serves up scoops of his most unforgettable experiences, peppered with viciously funny anecdotes from his personal life and seasoned with lessons on how to tell a riveting story in 30 seconds. And to talk to him, we have no less of a heavyweight. We have the one and the only Chetan Sashital. Chetan को हम voice actor सिर्फ नहीं कह सकते. Chetan is an absolute legend in many ways. He is a voice scientist, an actor, singer, legendary voice actor. He's probably and possibly one of the most respected names when it comes to voice in this country. There is no actor, no project, no character that he has not dubbed for in his illustrious career. Chetan Sashital has been an integral part of India Voice Fest from the very beginning, and we've had the honor, the opportunity, the privilege of having him with us over the years, and I'm delighted to have Chetan and Prahlad with us today. And let me also add, and let me say this on camera, I am really looking forward to meet Chetan and Prahlad on the 17th of December during the grand finale in Mumbai at the Rangshad Auditorium. For now, allow me, please, and join me in welcoming two legends in this session, Chetan Sashital and the one and the only Prahlad Kakkad. Hi. How are you guys? Prahlad, such a delight to see you. Thank you so much. Yes, we can hear you loud and clear. Thank you so much for joining us. Can we have Chetan? Yes. Chetan, hi. Hi. Hi, Prahlad. So nice to see you. I thought किसी ने तेरी गोटियां दबा दी. अब लग रहा है we have Prahlad Kakkad in the house. Chetan and Prahlad, thank you so much for doing this. And Prahlad, Chetan तो India Voice Fest के बारे में बिल्कुल जानते हैं. He's been a part of India Voice Fest since the very first season. But Prahlad, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि क्योंकि you've been such a stalwart of advertising. आपने सैकड़ों हजारों voices के साथ काम किया है through your career. I'm sure you'll be very happy to know, Prahlad, कि India Voice Fest एक इकलौता ऐसा मंच है which celebrates the voice acting, the craft and business of voice acting. Every year, more than 500 to 700 of us get together under one roof to celebrate the craft and the business. And my entire industry is waiting for the 17th of December to see you. और एक और बात आपको बता दूं, प्रहलाद, कि अभी से लाइन लगी है लोगों की जिनको पता चला है that Prahlad Kakkad is coming to get their copies of Ad Man, Madman signed by you. तो आप जब आओगे वहां तो बड़ी दिक्कत होगी आपको वापस लौटने में क्योंकि बहुत लोग लाइन में लगे होंगे to get their copies signed by you. So we are really looking forward to that. So, Chetan, are you going to thank you and yes, Chetan, I'm going to give this. I'm going to hand it over to you. So I'll see you on the other side. दर्पण को थैंक्स अर्पण करना चाहता हूँ. मैं पहले दर्पण को थैंक्स अर्पण करना चाहता हूँ कि उसने मुझे चुना है कि प्रहलाद का इंटरव्यू लेना है. और प्रहलाद has been my very good friend for I don't more than 40 years now. Prahlad. Yes. And we have worked on some of the craziest campaigns in advertising. And not only has he given his voice for me, but he has also played Yum in one of my films. sitting on a live buffalo.
Of No, course. absolutely. Chetan, I'll hand it over to you. I'll leave. You guys carry on. Yeah, I'm going to I enjoy will take the over now. conversation Bye as a bye. viewer. Bye, Darpan. Bye. Of course. Bye bye. Of course. Bye-bye. Tu chup ja abhi. So PK, it is such a nice thing to to have and to interview you. Did you from the beginning have a dream that I'll become an ad filmmaker or something like that? No, yeah. I wanted to be a horse breeder or a tea garden manager or something definitely outdoors. बाहर घूमते फिरते. So I managed to get a final interview in an international bank, and everybody in my family turned around and said, "Ore, Pappu pass ho gaya." So they were all celebrating. Laddu bant rahe the. Okay. Because I was considered a duffer in the family because I was dyslexic. और किसी को मालूम नहीं था dyslexic. So I mean, regardless of what I did, I always managed to just scrape through my exam. और एक दफे fail भी हो गया मैं. So failing was a very important part of my journey because it taught me how to deal with failure. Because it was I mean, हमारे देश में तो कलंक है ना, अगर तो आप फेल हो गए किसी चीज में, तो you not only let yourself. Exactly, but that was a time when dyslexia was not known. No. Okay. But when did you find out that you were dyslexic? When my children were dyslexic and my wife decided to have them tested, and when they were tested, they said this is hereditary, और तुम में से एक में से होगा, तो she was a topper, I was a duffer, तो मैंने कहा यही है कलंक. So at least they got that LD certificate. Yeah. Yes. Yeah, but when did you first make your you made your first ad film or whatever? Today you are an ad guru. You are a mentor to so many people. So many people you have mentored. You made them into production houses and all that. But who was your mentor? My mentor was always Shyam Benegal. So I was in an advertising company in Delhi, और मुझे मेरी सोच में था कि I should come to Bombay because that is where the action is. So one day Shyam Benegal came to Delhi and I told him, "Sir, I want to come and work with you." He said, "तू दिल्ली वाला है, तू तेरे से नहीं होने वाला, तुम सब जुगाड़ू हो." तो मैंने कहा यार, anyway, I got my boss Jog Chatterjee to send me to Bombay, and Shyam attached me to some other production house. He didn't want to work with me, and then I made a film on my own, and I showed it to him. After that, everything changed. Okay. So Shyam Babu, I remember once you were telling me, Prahlad, when Shyam Babu was shooting Manthan, you were completely out of frame, and तुम्हारा काम था कि वो गाय भैंसों को भगाओ in the frame. Correct. Not only that, there were many other things. I was slave number 3. in Shyam Benegal's unit, there were no assistants. They were all slaves. So I was slave number 3. Girish Ghanikar was slave number 1. Mandeep Kakkad was slave number 2, and I was slave number 3. So other than hakaroing bhanses and guys, because it's a rural film, it was shot on a farm. We had also ढकेलो one car which conked. जो entry थी हीरो की, वो एक एंटी कार में थी. तो हमने छान पूछ के देखा वो एंटी कार फार्म तक तो पहुंच गई वो कार. At the gate of the farm it conked. जो भी कुछ करो, हैंडल वैंडल लगाया, सब कुछ किया. उसका उन जमानों में तो स्टार्टर तो था नहीं, वो हैंडल लगाना पड़ता था वो एंटी कार को. हम हैंडल लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धक्का वक्का दे रहे, कुछ नहीं हुआ. तो we had to go on the other side of the camera and push the car into the frame all the way into the shot as if it was he was driving it. So if you look closely at Anand Nag's entry in Ankur, you'll see 3 small dwarf feet at the bottom of the car on the other side, running frantically. Multiple takes. So it was like full dum laga ke haisa. Dum laga ke haisa, totally. But then once
when did you set up Genesis? See, I was working with Sham, and then after Bhumika, I assisted him on Ankur, I assisted him on Manthan, and during Bhumika, three of us who were assistants with Sham, that is Ravi Upar, Deep Kakkad, and Prahlad Kakkad, we decided that I shuru karte hain apni company. So Sweeta was a very good friend, so she named the company Genesis. Okay. So we said, ठीक है, Genesis ही हो जाए. तो हमारे पास पैसा वैसा तो था नहीं to get a logo design. So we went to a printer and said, तुम अपने typefaces दिखाओ मुझे. So the ugliest typeface that we could find, we make that into the Genesis logo. मैंने कहा बाद में जब पैसा वैसा आएगा तो शायद change करेंगे. अभी तक change नहीं हुआ. No, but Genesis was, I think, a legend, you know. And you, as a legend, people were damn scared of you. You know, when I entered the voicing industry, at the first time that we interacted, you were full too into that MCDC mode. I think you were actually. No, that see, but Punjabi that gali you is said no, first slave, second slave, third slave. Always remember one thing, Chetan. अगर गाली देनी है तो पंजाबी में होनी. उसके अलावा कोई से other language doesn't have that power of Punjabi. Correct. Yeah, But so no, but people always felt that Prahlad Vikar is very, very intimidating. You know, उसके सामने तुम्हारी फट जाएगी. I was very particular on my sets. Off the set, I was one of the gang. But on the set, everybody had to be on their toes because we couldn't afford to be lax. And I realized very early in my career that the difference between good and great is detailing. Correct. और डिटेलिंग इनविजिबल होता है ना. यू कांट टर्न अराउंड एंड टीच पीपल डिटेलिंग. ये तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया. 19-20 में बहुत फर्क पड़ जाता है. Exactly. It has to be a part of your DNA that 19 नहीं होगा, 20 ही होगा. But the effort of getting from 19 to 20 is 3 times the effort to get from 0 to 19. Correct. So if it takes you 10 degrees of effort to get to 0 to 19, then it takes you 30 points of effort to get from 19 to 20. Now that is what makes the difference between a good production house and a great production house. Correct. And for exactly, that, because your team, the team that you worked with, I mean, you know, so many people who were there in your team, then they also came out and started their own production house, you know. Correct. But for every team of yours, they were so dedicated to the job, you know. And I have heard you screaming and shouting at them, taking their pants off because something went wrong. That one detail went wrong. Correct. But I know, I have observed them also later on in their life. They have become such good directors or whatever. It's all because of that. Because they understood that 19 और 20 में बहुत फर्क है. Correct. And that if you don't aim for at least 20, then there's no point because you are wasting everybody's time. So the attention to detail was very important, and if you notice that my unit was mainly girls. Yeah. Absolutely. And the reason for that is because women are naturally detailed. You know, they are brought up not in the lap of luxury. वो लाडले बेटे नहीं हैं, वो not लाडली बेटी है. तो उनको शुरू से they have to be very, very good at what they do for them to even get a compliment. अगर तुम लड़के हो इस country में, then the sun shines out of your ass. You can do no wrong because you're a boy. You know, when a boy is born in a family, laddu, petas, everything is distributed. Everybody's so happy. When a girl is born, everybody says, "Oh, abhi dowry collect karni padegi." You know, so the girls they grow up with a disadvantage, and because they grow up with a disadvantage, they learn 2 things in their growth pattern.
which is one is multitasking and one is attention to detail. So I found the girls were very, very good in terms of, and they hated being shouted at. The boys actually said गेंडे की खाल, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था. But if I shouted at one of my girls, then I used to, because I had a megaphone in my hand and it didn't matter who you were. The set was a very democratic place. But they hated being tokoed and shouted at in public. And they made sure that they never repeated that mistake again. Yeah, but it was a great team. But which was your first TV commercial then? My first, not TV, it was for cinema. Those days were the days of it was for cinema. Anderson. I did a whole series of films for Anderson. Sham had gone off to shoot Hindustan Steel, and we had a client called Jeffrey Manners, who used to make 9 Anderson films every year in the region of his language, and casting from there also. So we used to do a Bharat Darshan by train. Puri unit dabbe mein ghus jati thi, and we used to travel from Bombay to coastal Maharashtra to Kerala to Chennai and then come up the other way, and even go to Punjab, to Delhi, and do the film there. So that was a great learning experience for me, because it wasn't just one film; there were 9 films. So it was like Vasudhaiva Kutumbakam for you. Totally. So when I did my first set of 9 films, I wanted to push the boundaries of the films, because there was a formula which had been set and accepted because it worked for them. But I said, let's push the occupations of the people who get headaches. For what reasons? And you don't only get headache because of noise. You get headache because of tension. You get headache because of heat. You get headache because of the environment. So for all kinds of headache, there's Anderson. So we cast varied professions, and we used to not cast actors. We used to cast the real people. So unse performance nikalna became a big challenge, and that is why I cut my teeth on performances. So I was always very strong on performances after that exercise. No, but exactly. But do you remember what was the sign-off line of that commercial? Anderson? I don't remember, but it wasn't like Saridon. Saridon was the classic at its time. Sardar Seyaram, that was that. So Anderson had a similar line, but it was a song. It was spoken. Spoken. So that means that was a time when the voiceover was like a sign-off for a particular commercial. Correct. Always. And that was the time when we had legends like Melville DeMello or Pratap Sharma or correct. All of them. Even Jason Brikuna, even Kabir Bedi, even Mr. Bachchan. Yeah. Mr. Bachchan bhi also dete the na. Yeah. But then at that point of time, how was he like? Models used to have photographs and used to take auditions and all that, and decide who the model is. But how would you decide? Okay, this is the guy who will do the voiceover. See, advertising is stuck with one cliche at my time. It was that the voice of the product is the voice of God. Correct. So whoever sounded as close to God as possible was then taken. So they all had to have a deep voice, they had to have timbre, they had to have character. Basically, patli si awaaz se nahi hone wala. God is not patli awaaz. God was thunder. So whoever had a thunderous voice became a voiceover artist. And then slowly it changed. Over a period of time, like characters in movies changed, also voices, characters changed. Yeah, I think when the model... even for female products.
Correct. Even for female products, there was always a male voiceover, not a female voiceover. Correct. Even for Liril and all in those days, you know. No, totally. No, because the voice of God is male, yeah, and God is male. हाँ. नहीं, but ये जो change आ गया. When the character in the commercial got a voice, then everything changed. Correct. So that time, even that time, see, like there was no, there was model casting and all that, but there was nothing like I know, there was nothing called as voice casting. No, it became, but later on it became. And the flexibility of the voice was the main character. So voice of God भी कर सकते थे, common man भी कर सकते थे, मजाक भी कर सकते थे. Now, who were the first of them? You. You're the only one who had 50 voices. Yeah. So at that time, you weren't very smart. So you would charge for one voiceover and do 5 voices. So you became very affordable. So you became very popular. Then you started charging for every voice. Then people said, "Yaar, ये तो मुश्किल है, किसी और को ढूंढे." पर और था ही नहीं कोई. No, but I think that KRG Awards in I think 1989-90, that KRG Awards was something which opened the whole Pandora's box. Yes. When I had done some 18 characters, 18 creative directors of the agencies, all their voices I had done. Correct. And then everybody said that somebody has come who can do anybody's voice. Correct. But that was you. Yeah, no. So eventually when you got your reputation for doing anybody's voice, then finally if you couldn't get a star to dub for you because he was too busy or he didn't think it was important, or you couldn't get a cricketer to dub for himself because he was playing somewhere out of the country, then we had to get you to do it. Yeah. Who else would do it? So you did from Sachin. तो तूने डबिंग कितने लोगों के लिए की है? सचिन से लेके अमिताभ बच्चन तक. Correct. No, but you gave me the chance. You have always given me challenges. Yes. Remember one day you called me and you told me, Chits, you have to do TN session. Yes, I remember that. And I saw the rushes, and we were dubbing at Western Outdoor. Yes. And TN session was in his full South Indian accent. He was in full South Indian style, but he was also the head of the election commission, and he had been given a mandate where he couldn't be sacked. Yeah. Nobody could remove him. वो तो सबको कच्चा खा जाता था. So that ad was very interesting, na? Do you know I was a vegetarian? People say vegetarians are weak, indecisive, and slow. I am a vegetarian. I eat politicians for breakfast. So what? I still prefer vegetarian. Correct. That whole thing was Shakagari Raho. बहुत अच्छा है. Huh? It was what you call Amul vegetables. Safal. It was Safal. But Safal was an Amul brand. Yeah. Okay. Safal का वो peas. That is what they were. No, vegetables. Basically, they sell fresh vegetables. Bajar buli सब था. And he ate everything. So, correct. And Menaka Gandhi was also a part of it. She was also one of the this thing. And Shakahari Bano अच्छा है. She dropped the campaign अच्छा है for her own campaign. Menaka Gandhi को vote करो अच्छा है. No, but and after that period, once celebrities, Alec always used to say the day you get a celebrity in your commercial, your creative is gone for a toss. Yes, that was Alec. But that wasn't true for us. We always believed that the brand was bigger than the celebrity. The belief that the brand is the hero and not the celebrity. No, but that is what drove all our scripts. Whether it was for Pepsi, whether it was for TN Session or anybody. The fact was that Safal, vegetarianism was the hero. Correct. Not what you call Session.
After that session commercial, you know, the question was raised in Parliament. Correct. हाँ, क्योंकि ये क्या बोल रहा है रे पॉलिटिशियन को कच्चा खा जाता है. Yeah, we know because see, ad films apart, we used to do a lot of work on radio. Yeah. You know, when on radio we used to do Bihari used to be Lalu Yadav straight. Correct. And then Lalu Yadav also raised an issue in the parliament saying that हम सब लोग हमारा जो पॉलिटिशियन है उनका मजाक उड़ाता है. नकल करते हैं. हाँ, नकल करता है, तो इसके लिए you should ban. They came out with a dictate. You can't do politicians in ad commercials. You can't do anything. Correct. And that is where this whole IP thing started, actually. Yes. But again, coming back to thing, because which is the most memorable commercial that you have done? You know, which you still remember, boss? For you, it was you playing the Sardar with Sachin. Yes. I remember, and I remember that was we shot it at Rajkamal. No? Correct. Running around a Pepsi truck. Yeah. And we went and you introduced me to Sachin, and you told him, you know, look, he's going to play the Sardar. And Sachin said, but he doesn't look like a Sardar. अभी makeup हो जाएगा तो makeup के बाद दिखेंगे. And you told him that he's also going to do your voice. Because उसके पहले I had done that Azhar, Sachin and Vinod का film, na? Correct. Vinod Kamli and Sachin ka. Correct. You had done both of them. Relax, Mas. Have a pet. I did all the three of them. Yes. Relax, Mas. Have a pet. No, so when you told him that I'll do his voice, he said, but how can you do my voice? And I had replied to him in his voice that time, just like you're talking right now. And he said, Allah. Correct. And that Allah, you made it into a mnemonic for every commercial of Sachin. Sachin's correct. Yeah. So kuch bhi hai to Allah. So, but then, how do you? Anything was there, but what do you look for as a voice? As a voice, a lot of people who are listening to us. I look for a voice to represent the brand. And therefore, if the brand has been built with character, if the brand is not an inanimate object, but it is a participating player in the commercial, then the brand has a character. So the voiceover has to represent that character of the brand. You understand? Yeah, so, but I always feel that the voice has to complement the music also. What is happening? Music is very important. No doubt. But most important is that the last voiceover is the voice of the product. And if you have built a value into the brand, and if you have given it a character, and it is young, irreverent, naughty, whatever it is, then the voiceover has to represent that. And if you catch that flavor, and very few people can, because they're not perceptive enough to understand that, you know, brands may be jaan hoti hai. And that as a jaan, you have to identify them with the kind of people that you think they are. That means that a voiceover, that means that a voiceover needs to have that intuitive power. Intuition hona chahiye usko ki wo. Absolutely. So that's why you show the film to the voiceover artist. You don't just send him blind into a studio and tell him, bol, to 2-3 alternatives there. वो नहीं होता. I show the film to the voiceover and say, देखो, you are the voice of the brand. Now you give me a voice that you think is the person that lives in the brand. Correct. Yeah, but आजकल, if you see that, we have seen the golden period of advertising. Today, right. सामने वाला जो हमसे डिस्कस कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि क्या करने का. नहीं. Most of the time they're lost. We don't have those kind of people today. See, you know, we used to have a word which they still use, but they use it without knowing what it means. Correct. It's brand value.
Correct. Brand value is not something that is the कीमत of the brand. Brand value is the legend you build around the brand and its communication. So communication में you have to pick a person who you think the brand actually represents and use the value. For instance, if your brand name is say Abhimanyu, so it's Veer Abhimanyu. Na? Abhimanyu is Arjun's son. He's 19 years old, and he goes into battle on his father's side, and he's huge. I mean, he's a Mahan warrior. So, if you had to have a dialogue between Arjun and Abhimanyu, what voice would you give Abhimanyu? What voice would you give Arjun? Tell me. Correct. One is a matured father. He knows this war. Correct. And the other is somebody who's full of blood rush. Yes. And he's doing his duty. Yeah. And he has heard how to चक्रव्यूह भेदना कैसा उसने सुना है, लेकिन उससे बाहर कैसे निकाले उसने नहीं सुना. नहीं सुना. But still then उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी. हाँ. नहीं, but ये जो what do you think that voice actors or voice artists should do to improve or to develop this whole intuitive thing, or is it inborn? No, it is not inborn. It is something that you actually study and you observe and you make a point of it in your own methodology. That इसकी voice in your own mind, you उसकी गूंज जाती है आवाज की, ये बंदा इसकी आवाज की ऐसी गूंज होगी. And only then can you actually replicate it. Unless the director is so clear about in his mind what kind of voice he has, that he actually demonstrates it to the voiceover artist. I want this kind of voice. No, because see, my theory is very simple. Every face has a voice and every voice has a face. Correct. So when your voice becomes perfect, you can actually see the face. That's exactly what I'm saying. So the value of the brand is in the face of the brand. Correct. Okay, which personality have you developed the brand on? For Correct. Honesty, for truth, for generosity, for courage, for fighting spirit, whatever. So I remember we had gone to Tirunelveli. We were shooting for Teak Equity. Correct. And you were not happy with the script, and you told me, boss, Chets, you write the script now on the spot. Yeah, because the script was, there was a lady who was walking among the teak trees and considering them as her children. The whole thing was, मैं माँ हूँ. हाँ, मैं माँ हूँ, पेड़ों की माँ हूँ, और हर पेड़ अलग है, और हर पेड़ की पर्सनालिटी अलग है, जो मैं सबको पहचानती हूँ, you know. And so we had to give her a character. So there's a strong woman. She's buried 3 husbands. Remember that line? Yeah. मैंने तीन पतियों को गाड़ा है. Rajita Kochar was the model that time. She passed away recently. Yeah, she recently passed away. And then there was very good actor. And there was a South Indian, and then I was a Sardar, as usual. Yeah. But it was a thing. But you have come up with some things like, suddenly you said, I don't like the script, and you write the script now. Yeah. That was a gun. See, क्या होता है कि when clients write scripts, they write them with an agenda. And that agenda is that all my product properties must come out in the script. So it becomes very verbose and very boring. Now, if you start arguing with the client at a PPM, then he will get अड़ियल. He'll turn around and say, मैं पैसा दे रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर. So I found a methodology in the madness. I said, yeah, I don't agree with what he's saying, but I'm not going to argue with him. I'm going to agree with him. And then I'm going to do my own thing also. So in the beginning of my career, I actually shot films twice.
the same film. Okay. With my script and with their script. And then I showed them their script at the screening. And they'd all get into a huddle and say, "Yeah, isme dum nahi hai." You know, I felt like telling them, I told you, yeah, I'm the filmmaker, yeah. Listen to me. You're paying me money to be a professional. At least listen to my professional advice. But they're not willing to do that. They so ideal, they research it 500 times. Research में क्या निकलने वाला है? Creativity थोड़ी निकलने वाली. Yeah, but some of the best films have got bombed in the research. Correct. Like when we did Closer. Huh? Yeah. So what happens then is that you use your intuition and you use your experience, and you use your entire whole retinue of experience and say, what will people latch onto? इसमें hook क्या है? The hook line. The hook line. Because people only remember that दिल मांगे मोह. Correct. बाकी commercial याद आया नहीं आया, it doesn't matter as long as it supports the line दिल मांगे मोह. Correct. So even Britannia 50-50. What? Sad magic, you know. Correct. So the fact is that your hook line is the most important line on your film. And if the rest of the film does not support the hook line, then you'll forget the hook line also. Correct. So there's no science to it. You know, it is frankly random. And therefore, what the client's argument is that अगर तू random कर रहा है तो मैं क्यों नहीं random कर सकता हूँ? The difference between the client and the filmmaker is the filmmaker is making a film for a consumer, and therefore himself. The client is making the film for only his product. So his focus is only on the product. Now, how much of your product can you talk about? 30 seconds में वो बोलता है, यार तुम मेरा product सिर्फ 5 seconds में लाए हो. 25 seconds you've been telling some story. So at least 20 seconds तो मेरे product के बारे में होना चाहिए ना. So when you tell him that memorability is because of punchline, yeah, you lead up to the punchline. So storytelling is a craft, is an art. Most clients don't know what storytelling is. They don't know how to tell a story. So if the problem is in that ad span of some whatever that 2 minutes there are so many commercials which come one after the other. Correct. And which one do you remember? Yeah, exactly. But today those commercials that touch you, touch you emotionally, not logically. See, their strength is logic. Filmmakers and creative people's strength is emotion. अभी अमित शर्मा को देखो. Is the whole take Amit Sharma of Chrome Films. Okay. He's the only filmmaker today who I know who stood his ground. He has not compromised his vision at all. He'll walk away from the project, and that's why he makes classic films like the Google film with a friend in Pakistan and the old man whose 70th birthday it is, and the granddaughter goes on Google, finds the friend, invites him to India, gets his visa, gets the flight details, picks him up and brings him for his 70th birthday. It is such a moving film. If Google had told him that boss, Google तो इसमें invisible है, बीच में वो टाइप कर रही है Google पे to find the हलवाई की दुकान, to find the address, to find Lahore, to find all the details. But it's so cleverly done that Google is always there, but not there. It's a part of the story. It's not different from the story. Now, I can imagine Amit sitting down there and fighting with the client and saying, नहीं boss, ऐसे ही होगा. या तो मैं ऐसे ही करूँगा या ना ही करूँगा. We couldn't afford to do that at that time. Later on, yes, but when we were building our reputation, I had to make the film twice
had to do it their way and my way. And when we showed them the film their way, they said, "यार इसमें दम नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ये है, वो है." And nobody took the onus of the responsibility that उनकी script थी. So I should tell them, boss, if you don't like the film, you tell me what I've not done in the script. I've done it exactly as per your board. Now, the rest is not my fault. You insisted on it. I said, however, मेरे पास एक फिल्म है, मैं शोरील पे डालने वाला हूँ. वो आपके लिए नहीं है, मेरे लिए बनाई मैंने. वो देखना चाहता है, आप देख लीजिए. Now, the basic premise of the script is the same. But the whole presentation was in a story form. Correct. So it engaged you, no? From first 5 seconds, it engaged you. अब क्या होगा? Okay. Then they look at it and say, हाँ बहुत अच्छी है. Then they turn around and say, अच्छा हमारी फिल्म से ये हिस्सा निकालो और अपनी फिल्म से ये हिस्सा निकालो और तीसरी फिल्म बनाओ. I said, no, sorry. You either take your film or you take my film. You can't dick around with my film. My film is as it is. It will go on my story. You can run your film on TV if you want. So then they had to. They didn't like it. The agency didn't like it because they said, "यार हमारा क्या होगा कालिया? इसमें तो हमारा कोई छाप ही नहीं है." So they would want to change something in my script to take some authorship. So we had a tough time. I got a very bad reputation with agencies. They turn and say, "नहीं यार ये script change कर देगा, shoot it." But what they didn't say was that I also shot their board. Correct. And the final result used to be so good. No, and if I didn't like the film, I would tell the client, "I don't like the film. I'm going to reshoot it at my cost." I never asked them for extra money. I took the full onus of the responsibility of making the commercial work. मैंने कहा जब तक ये सफल नहीं होगी in its objective, I will keep shooting it at my cost. Yeah, but you have launched so many brands, you know. Like Pepsi was a big thing, plus getting Sachin, everybody in that. I think I still remember that Sachin and Mr. Bachchan's commercial. Correct. The kite one in Jodhpur. The kite one. दिल की पतंग है, सपनों की डोर है, आसमां भी कम है, ये दिल मांगे मोर है. Correct. That was a superb thing, and it was very catchy one. And again, your Oi Bubbly. Oi Bubbly, be my lover. That wasn't mine, nah? That wasn't mine at all. By that time, we had the whole team in Pepsi had changed, and so had we. Oh. And they didn't want me to work with them, and I didn't want to work with them because they wanted storyboards and they wanted to go back into the lever style of working. And I wasn't used to that with Pepsi. Because we had a very good creative equation with Viva. Anuja Chauhan, me, and Viva had a damn good equation. So हम set पे जाते थे with the script, and we used to rehearse it, and I used to ring up Viva and say, this is not working. So she said, "What do you want to do? Cancel the shoot?" I said, "No, we change the script." She said, "Are you sure?" I said, "Yes." And we changed the script. Yeah. I mean, I know, I've seen it. When we're doing Maska Chaska and all that, we changed the script. No, but with Sunil Alak, it was like he was a part of the team. Yeah. He was a creative part of the team. As a matter of fact, all the ideas were his. Correct. Right from So we had that kind of freedom. Gabbar Ki Asli Pasand, when he suggested that film for Britannia, Glucose. You remember that old Gabbar Ki Asli Pasand? They got the whole cast of what you call the Sholay, and they shot the film exactly, and they changed the dialogue slightly. Correct. No, but you know that the whole Gabbar Ki Asli Pasand and all that. See, what happened is I thought one of the big things that you put Britannia into was to get that ting ting ting. You know, that was also a fight because the team Britannia, not Al-Sunni,
ब्रिटानिया की टीम जो थी ना, their jingle which was musical was Correct. sacrosanct. Correct. That was a holy cow. So उसको you couldn't deviate. So when you gave they used to give it to us as a part of the recording, and we had to go to the music director and say, देखो, it should match this meter and this octave, because it can't be that your jingle is in another platform and ये suddenly ये इसको add on कर दिया. So then we realized that during one campaign, which was World Cup Jao, Britannia Kha World Cup Jao. हाँ. I said, let's give the ownership to the consumer. Now, why should the ownership of the signature belong to the manufacturer? जब तुम बिस्कुट कंज्यूमर को दे रहे हो तो उसका सिग्नेचर भी कंज्यूमर का ही होना चाहिए. So we made everybody say ting 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 in their own way. We played them the jingle and say, "Ab tu isko nakal kar." And some people said ting 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 ting. Some people said ting 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 ding ding. Some people said something else. It didn't matter. Yeah. It didn't matter that they didn't represent it exactly, but it mattered that they were ownership. Correct. Suddenly, the mantle of ownership passed from the manufacturer to the consumer. Correct. And Sunil immediately realized that. And he said, yes, do it. They were horrified. They are, हमारे jingle के साथ तुम dicking around कर रहे हो. कैसे कर सकते हो? Yeah, it was the whole thing, ना, that World Cup cricket मिला, cricket एक रुकना और वो बोलता है कि यार at the ends Britannia Kha World Cup Jao. World Cup. Ting 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 ting. Everybody Correct. said. Then the same Everybody thing came. said ting ting. Yeah. And 50-50 में भी आया ना वो. Oh, Britannia 50-50. Very very. And then we got my son Anjun to say ting ting ting. Yeah. In the end, running. Yes. But that really created some things of, like आज भी हम लोग वो याद करते हैं. People still remember that. Britannia was ting ting ting. Correct. वो तो घुस गया ना दिल में, क्योंकि it's not only mind, it's also your दिल. The brand belongs to you. So there is a certain loyalty. When you say ting ting ting, you say it with great pride. Now, I always feel that we are very vocal people. हर एक आदमी अपना अपना चीज बेच रहा है, अलग अलग थिंग है. The thing is, as a voice over, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं कितना अलग बेच सकता, so that my voice catches that attention. And if my voice catches that attention, then obviously that commercial will stand out. बिल्कुल सही. Absolutely. So what is your definition of a voiceover? I mean, what is a voiceover? My definition of voiceover is, as I said, it should represent the character of the brand and the value of the brand. And therefore, I used to, before we met you and realized that you could do all the voices, I would have to actually find voices to represent the brand. That because everybody else is so stereotyped, they would only do one kind of commentary. They couldn't deviate from that. So I had to find new voices. I also introduced hell of a lot of new voices. Exactly, because when I was struggling trying to get work, I had met Mr. Vanmali, and he said, no, you cannot become a voiceover. I said, why? Because I was really emoting and putting more character into the voice. No, correct. You have to do a voice like a films division, how that reader reads at the same time. Flat voiceover. Flat. तो वो एक था, but then बाद में of course everything changed. थोड़ा करके हमने बदला ना. We have. I also remember, that when we were, and you have made me shoot some of the most dangerous commercials. That Yamraj thing you said, Yamraj, yes. Made me sit on that live buffalo, and then finally that buffalo buckled, and he threw me up in the air about some 10-12 feet, and I fell down on those cobblestones, and I had your lovely ladies massage my back during the shoot. They were most upset. They said, "Yeah, Chetan bloody advantage ले रहा है साला. उसको चौनी की चोट लगी और ₹5 का दिखा रहा है."
तो अच्छा give him his due यार. उसको कभी lovely ladies मसाज नहीं करती उसकी पीठ पे. He has to go all the way to Bangkok for that. He has to go all the way to Bangkok for that. तो थोड़ा तो उनको उसका लिहाज कर रहे, गिरा है. But really, Prahlad, we've had some amazing times. Whatever, like I still remember the 50-50 Muska Chaska when we changed the script and your heart line strong, your headline wrong. Correct. Heart line strong, headline wrong. Your Saturn in first house, wife in neighbor's house. Correct. I know what it is. I think. But you know who took the voiceover business to another end? Once radio went private, then radio jingle became so creative. Radio voiceovers became so creative. Each one, you could close your eyes and you could see the person. Correct. In the character of the voice. But unfortunately, today there are very few people who actually write for radio. Because today under that barter thing that they directly the client ties up with the FM channel, they only write the script. Their RJs, they do the voices. I know. Multiply kar diya na. See, today clients have lost the edge, which says a person like Sunil Alagh. Sunil Alagh was very clear. He said, I can't afford to be mediocre. मेरे पास पैसा नहीं है. That if I was a big company like Levers or some multinational company, I could afford to be mediocre because I could have frequency. So if you are कम से कम सा commercial, चल से commercial, उसको तुम जितनी दफे बैंक करोगे उतना थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा ना. पर अगर पैसा ही है बैंक करने के लिए, तो then you have to have an outstanding commercial where it catches everybody's attention, goes viral. So before digital media, there was a virality to commercials, and that was when they were out of the box. They were hatke. Correct. And that is what he was looking for all the time, because he said, "Dekho bhaiya, my each brand has a budget of 1.5 crores. That is nothing. If I don't have a great communication package, nobody will notice me here." So he used to take a lot of risks in terms of what to do. I remember when he suggested that we use my 3-year-old son. I refused. I said, "ये किसी की सुनने वाला नहीं है. इसको स्क्रिप्ट पे कैसे यू राइट अ स्क्रिप्ट ये कर रहा है वो कर रहा है, वो नहीं करने वाला. वो जो कुछ मर्जी है वो ही करेगा, और नहीं मर्जी है तो वो भी नहीं करेगा. व्हाट आर वी गोइंग टू डू?" तो इसे ये ले, 3 दिन का पैसा ले तेरे शूट का. टेक अ कैमरा विद अ लॉन्ग लेंस एंड अ क्रू एंड जस्ट फॉलो हिम थ्रू द डे. जो कुछ करेगा शूट कर. सो रहा है शूट कर, कूद रहा है शूट कर, टेंट्रम फेंक रहा है शूट कर, और फिर बाद में देखेंगे हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट. So luckily, my very good assistant Kenny Dawson had a working relationship with my son because they were friends. Kenny was 30-year-old and Arjun was 3-year-old, but they were on the same wavelength. Well, he never would listen to me because I was his father. So I removed myself from the picture. तो मैंने Kenny को सामने रखा जो कुछ करवाना करवा. So the scripts are very loosely done with cricket, tennis, and football. And there was no such thing as any rule. He could do what he wanted. Yeah. He was bowling, he was batting also. And what's that jingle was there? No, move over, make way. That was later. Yeah. But this was like, this was Swasth Khao Tan Man Jagao. Swasth Khao Tan Man Jagao. Correct. So he did an entire corporate campaign. He didn't do it on a brand. He did it on Britannia. That Britannia is healthy and
children like Anjan, who are badmashes basically, and you love them for it because they're badmashes. The biscuit makes them badmash, full of juice and energy. So it worked like a bomb. Yeah. Every woman who saw that commercial said, "I want a boy like him." Right. That is when I lost my greatest opportunity. I could have sold myself through one. मैंने इसको बनाया है. आ जाओ, send me a photograph. If you're good looking enough, I will give you a boy. And if it's a girl, your money back and I'll take the girl. Because I had 3 sons. I wanted a girl. तो मैंने कहा यार फायदा ही फायदा है, पैसा भी मिल जाएगा, दूसरे भी खुश हो जाएंगे, लड़के मिल जाएंगे उनको, और अगर लड़की निकल जाए गई इत्तेफाक से तो वो मेरी हो जाएगी. So Prahlad, I think we have to wind up now. But on that last note, what would be your advice to the young budding voiceovers? What you would like to tell them? My advice to them is to observe, to watch as many films as possible, and you see the voices of the characters, and imagine the character for the brand, and then give that voice in conjunction with the director. You see, the director also has to have an opinion. अगर director आपसे मिला नहीं हो, तो then you can do what you want. You will not listen, because the onus of the responsibility of doing that execution is the director, and he is answerable. So he must be able to justify the voice, especially if it's not the voice of God, because the voice of God era is over now. Now it's the voice of character. Correct. And real life. Yes. A person and that you think should be. You should be able to identify with them. So if you do a voiceover, which is Humphrey Bogart's voice, played against Sam, then people who've seen Humphrey Bogart in his earlier days and seen Casablanca will immediately say, yeah, ये तो Humphrey Bogart है. And it adds value. Correct. But today the problem it adds the depth. But today the problem, Prahlad, is the IP has come into picture. Like if you have to do any personality voice, you need his permission. You can't do. All those guys are dead and gone, yeah. Guys were dead and gone. That's okay. But जो live है, जो जिंदा है. No, but तू हिंदी में नकल कर सकता है अंग्रेजी एक्टर का. हाँ. तो क्या उसको हिंदी का मालूम? But the voice quality is the same. हाँ. अपने यहाँ भी है. So great, Prahlad. Great. Mogambo Khushwa was a very big line at its time. Yeah. And everybody wanted to use it. Mogambo Khushwa. Correct. The whole that laughter. अरे भाई ये भी कोई कहने की बात है. That whole. Amrish Puri was unique. Yeah. He was also a voiceover artist. He also did voiceovers for them. Yeah. So I think we had a great time, Prahlad, and I think all the voices who have been listening to us have got a chance to get something from you. Have given a lot to them, a lot of food for thought. What I want today's filmmakers to do is have a style of filmmaking which is recognizable. So, because in ad film, nobody has a name. But at our time, people could recognize, ये प्रहलाद की फिल्म है, ये White Light की फिल्म है, ये Johnny Pinto की फिल्म है. There was a certain consistent style of making films which were recognizable. Today, I can't recognize anything. It's a big jumble. They're all so mediocre that I don't want to recognize them. So, if you want to be the privilege of making films, you must put your signature on your film, and your signature has to be consistent.
Otherwise, the bank will bounce the check. Correct. So if they make films Beautiful. in a particular style and are consistent about it and are strong about it, then people will come to them for that. You're not a jack of all trades. You either excel in emotion like Amit Sharma, or you excel in humor, or you excel in action, or you excel in something. So you have to be a specialist today. Yeah, because we had our Indian Academy of Advertising and Film Art, IFA, where, but that was there. It was only there for about Correct. 10 years, and then it stopped. Where even voiceovers were given. Correct. They had that technical It was the technicians award. It was meant for technicians, not for products. Correct. But unfortunately now India's Voice Fest is recognizing the voice talents, and they have been giving awards to several voice actors. ठोका ठाके चल रहा है. अभी क्या है, ठोका ठाके चल रहा है. The cheapest voiceover is the most popular. तेरे और मेरे जैसे लोग अभी obsolete हो गए. We become dinosaurs. I don't agree with that, Prahlad. Because if you look at the hundreds of comments that people are putting out, I don't think any of these comments even remotely indicate that any of you are obsolete. People are writing that this possibly has been the most invigorating session that they have probably ever heard, and I really wish more such legends come out and share such amazing nuggets. This is we don't want this to stop. I know time का limitation है थोड़ा सा, but आप ये समझिए प्रहलाद कि जो आज की generation है, उनको कहाँ मौका मिलता है to listen to you? I'll tell you the glue that created creativity within scripts, where you could take liberties with the script, and that glue was called trust. Beautiful. There is no trust anymore. Clients don't trust agencies. Agencies don't trust producers. सस्ता और किफायती. थूक लगा के हाइशा. I wish I could disagree with you, Prahlad, but as someone from one generation down, all I can say is I think all of us are living on one word, which is hope. So much as I do agree with you that the word trust is becoming... You have to build trust. My clients have stayed with them for 20 years. They came back to me for 20 years. Now, why would they do that when I was such a difficult person to work with? I was Adial, I insisted on my way, and I would take responsibility for it, but still they didn't like it. Yeah, because you delivered masterpieces. I guess trust is built on consistency of results. That is what it is. That is what it is. Yeah. Absolutely. Absolutely. Prahlad, I know this can go on, and listening to you and Chetan is sheer delight, and I'm sure everyone who is watching is just waiting कि कब वो मौका आएगा जब we will get to see you in person. So please consider this my humble invite for the 17th of December at Rang Sharda, where the entire fraternity, hundreds of us, not just voiceover artists, Prahlad, but even recordists, engineers, writers, directors, everyone will be there. And allow us the opportunity to honor you. And in fact, it will be an honor for India Voice Fest as a platform. ये एक बहुत honest कोशिश है. And if I can take the liberty, Prahlad, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि you were talking about a brand which said that they could not afford to be mediocre. Correct. Mediocrity is a luxury. So I don't know if I can draw a parallel, but हम जो ये कर रहे हैं India Voice Fest के नाम से, आप 40-50 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. आपने वॉइस ओवर इंडस्ट्री को भी उभरते हुए देखा है, अब आप उसका डिक्लाइन भी देख रहे हैं एक तरीके से जो आप कह रहे हैं. आई एग्री विथ यू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हम लोग बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश पे जिंदगी चलती है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो आज तक नहीं हुआ है 40-50 साल में, कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म हो जहां पर धीरे धीरे आगे जाकर सैकड़ों हजारों लोग जुड़े. क्योंकि जैसा कि वो हैवल्स फैन का जो एड था राजेश खन्ना का, जिसको
हमारा चेतन, I guess Chetan, if I'm not wrong, did you not voice for that? Yeah, I did. राजेश खन्ना जी का, तो उसकी जो लाइन थी ना चेतन, उसकी जो लाइन थी कि आई थिंक हवा बदलती है, देयर वाज अ लाइन समथिंग अराउंड दैट वाज अ टैग लाइन कि हवा बदलनी चाहिए या हवा बदलती है। तो मैं भी समझता हूं कि हम जो ये कर रहे हैं, हवा बदल, एग्जैक्टली। तो उसी तरह हमारे लिए भी एज एन इंडस्ट्री, द वॉइस ओवर आर्टिस्ट कम्युनिटी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी फ्रैगमेंटेड एंड अ वेरी डिसइंटीग्रेटेड कम्युनिटी। आई एम श्योर यू एग्री विद दैट। तो ये कोशिश है टू गेट अस ऑल टुगेदर। Everybody is competing against each other. And like you're saying, आप कह रहे हैं the cheapest guy. I would like to add to that, in advertising right now, it is the guy who is right now in Bandra. Correct. दूर से नहीं है। So, absolutely. And Prahlad, allow me please to show everyone the cover of your lovely book, Adman Madman. And please, I'm requesting everyone to, if whoever has not bought this book, to please go ahead and buy Adman Madman. और अगर आपने इसको अभी तक नहीं खरीदा है, तो मैं कहूँगा कि आप 17 दिसंबर तक रुकें, क्योंकि 17 को इंडिया वॉइस फेस्ट पर lots of copies of Prahlad's book will be available, and hopefully we will have the luxury, the privilege of having Prahlad Kakkar sign your copy if time permits. So I'm really looking forward to this, and मेरी copy पर तो मैं जरूर sign करवाऊंगा आपसे. I'm very excited. Have you read it? And I haven't. I'll be very honest. I haven't read it, and I've just got the copy. Because you'll fall off your chair. I am going to, so and funny. I assure you, I'm going to read it before the 17th. Yes. I'm not going, because I've heard that people are not reading it. People are devouring it. So I'm going to literally enjoy it. And Chetan, have you got your copy signed by Prahlad? No, I got the copy. Today I got it. Now, if you are a book by Prahlad, I am coming home. You tell me. Correct. And I will get it signed from. Done. Great. Thank you so much. And Chetan, we are looking forward to seeing you on the 17th. पिछली बार Chetan आप नहीं आ पाए थे. In my opinion, Chetan's greatest job that he's done to date was actually dubbing for Balasaheb Thackeray. Oh wow! Yeah, absolutely. So the film that was made on Balasaheb Thackeray, he was known more, and they Ghoom Firke, they finally came to him. They tried many things, but it never worked. And Chetan was the only voice that people could close eyes and could actually see Balasaheb. Yeah. That's what voiceover is all about. Beautiful. What a beautiful way to sum it up. And thank you, Chetan. We could not have asked for anything more. You've loved us so much always. Chetan, 17 तारीख को, please, we are looking forward to see you. और हम लोग मिलेंगे. Prahlad, looking forward to see you too on the 17th. And thank you so much for doing this. Thank you for sparing your precious time. And both of you have a lovely evening. Thank you. Bye-bye. Thank you. Good night, everybody. Night. Good night. Thank you, Prahlad, for a lovely time. Thank you, Darpan. Thank you. Thank you. Bye. Avjo, Maria. Avjo. Everyone, I am at an absolute loss for words. What an evening. I'm sure कई लोग चाह रहे थे कि that this should not end. But all good things come to an end. And the good thing about things coming to an end is there is hope for something more. और 17 तारीख को, अगर आपने अभी तक इंडिया वॉइस फेस्ट के ग्रैंड फिनाले का डेलीगेट पास नहीं लिया, आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, क्योंकि कल मुझसे मोना शेट्टी ने परसों मुझसे पूछा था व्हाट कैन द इंडस्ट्री डू टू सपोर्ट, और मैंने 2 शब्द कहे थे, शो अप. सो प्लीज शो अप. And there is a QR code here. You can scan that QR code and get your delegate pass. And Chetan Sashital and Prahlad Kakkar might be legends and absolute gems of the industry. But then there are so many stalwarts and veterans coming. Each one of them is a veteran and a star in their own right. So please, इन सबसे मिलने, एक दूसरे से मिलने 17 तारीख को जरूर आएगा. और आने वाले दिनों में हर रोज do log in to the India Voice Fest YouTube channel for a live streaming of एक से बढ़कर एक sessions आने वाले दिनों में. In fact, tomorrow we have
two international voice stars. One is Rachel Naylor from the UK, and the other is Dawn Barnes from Los Angeles, USA. And then we have Sonal Kaushal, our very own celebrity influencer, voice artist, who is going to teach us a thing or two about social media. And yes, it's going to be a very, very exciting Sunday evening. तो वक्त निकालिएगा. मैं हूं दर्पण और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस फेस्ट 2023, produced and organized by Sugar Mediaz. The main sponsors are Sound and Vision Studios, associate sponsor Magic, industry partners MnM Talkies, G-Corp Media, Gulmohar Media, Aural Arts. Our proud supporters are Neshma Academy of Acting and Voice Acting, Surabhi, Javeri, Vyas, KRG Kreative Studio, and Skylink Freight Forwarders. And thank you, all of you, for your support and love and for your precious time. I'll see you tomorrow. Till then, goodbye and good night. Hi, I'm Mona Shetty from Sound and Vision Studios. I'm very proud and excited to be the main sponsor of India Voice Fest for the 6th year in a row. I'm really looking forward to a fun-filled week of exciting sessions. I look forward to seeing you there, especially at the award ceremony on the last day. So do buy your delegate pass quickly. Go to indiavoicefest.com and get your delegate passes. See you there. नमस्कार,
एक बार फिर आ गई है वो घड़ी। कौन सी घड़ी? अरे भाई, इंडिया वॉइस फेस्ट वाली, जिसमें हम सब मिलकर अपने काम को सेलिब्रेट करते हैं। Audio Magic is very very happy and proud to be an associate sponsor for India Voice Fest 2023. क्या आपने अपना डेलीगेट पास लिया? अरे हम मिलेंगे कैसे 17 दिसंबर को? I am going to be there. All of us from Audio Magic are going to be there और हम सब साथ मिलके खूब मजे करेंगे। तो जरूर आइएगा 17 दिसंबर 2023 इंडिया वॉइस फेस्ट।